Engineering and National Seminar on Emerging Technologies for Advances in Agriculture and Horticulture. Today's third session is basically on post-harvest engineering. And for this session, the chairman is Dr. Nachiket Kotwaliwale and co-chairman Dr. Mohan Singh. Dr. Kotwaliwale is Director CFED from Ludhiana, and Dr. Mohan Singh is Professor and Head Post-Harvest Process and Food Engineering. Today's reporters are Dr. Sanjeev Garg and Dr. A.K. Gupta, Ajay Gupta. First of all, I would like to welcome Dr. Nachiket Kotwaliwale, Chairman for this session. मैं सुनेगा गुलदस्ता है आइए सर जी I too would like to welcome Dr. Mohan Singh, HOD, Post-Harvest Process and Food Engineering. In this session, or the third session of this seminar, and the session begins with the lecture of Dr. Nachiket Kotwaliwale. He is Director of CFED from Ludhiana. So, to begin with, we'll have some information, some important information on what's going on national level in the field of post-harvest process and food engineering. So I'd like to invite Dr. Kotwaliwale to enlighten us with his lecture. Dr. Kotwaliwale, please. Thank you, Dr. Abrol. Okay, as I have been assigned to talk on newer frontiers in post-harvest processing in agricultural commodities. The major issues, I will discuss some of them in the beginning. Situational challenges. We have some of the situational challenges that we as Indian agriculture are facing. Some of these have been indirectly or directly highlighted during yesterday's presentation by Dr. Mehta, or even during the address of DDG. And even the Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor, he also mentioned these things, that we have small land holding, we have limited purchase power of farmers, limited availability of farmer and skilled labor, like Dr. Mehta yesterday showed that even this farm labor is also dwindling day by day.
Drudgery in pre and post harvest operation are huge, and nobody wants his next generation to be in the area of agriculture because it is drudgerous operation. But wherever people have gone for something using some kind of machinery or some kind of high-tech things, then the next generation is very happily doing it. And we have seen it in many parts of India that some progressive farmers using appropriate tools and gadgets have been practicing agriculture. Huge post-harvest losses. Here I am giving only a figure of 1 lakh crore rupees per year, but in fact the recent report by NAPCON, which was conducted, a study was conducted during pandemic. They say that although over the past 10 years, the post-harvest losses have reduced by 0.5 percent points, but the value of the post-harvest losses has gone up to 1.5 lakh crore per year, which is a huge amount. And a country like India, where the whole agri-infrastructure fund for the whole 5-year plan period is 1 lakh crore only, there we are losing 1.5 lakh crore every year. That is a huge amount. Then year-round employment is another issue. Agriculture is not giving year-round employment. Agriculture is giving employment to laborers during only a few operations like sowing, then weeding, then harvesting. Rest of the time they don't have anything. And that is why the labor is moving from agriculture sector to other sector. It is a very normal phenomena in economics that people will move towards that activity which contributes more in the nation's GDP. And at present, service sector is contributing more. And like Dr. Mehta yesterday presented, that at present our contribution is 17 to 18% agriculture contribution in GDP, and it is likely to go to 8%. Not that agricultural activities will reduce, but the other sector will increase very high in high speed, and that is why labor will go to that sector, and we cannot stop it. So what we have to do is, we have to make this sector as lucrative as possible. We have to make this sector as comfortable as possible so that good brain retains in this. Then profitability and sustainability, everything boils down ultimately to economics. And since the farmers have limited bargain power, there are now environmental issues also. So these are some of the situational challenges. Environment and biological challenges I already talked. Sometimes we might have, we had this pandemic kind of thing. We had locust attack. We had different type of foot and mouth disease and so many types of diseases, and they are coming. So these type of challenges will be there. Cost of mechanization. This also is important, that we cannot go everybody as a scientist when you are talking, as a professional when you are talking to any social person, he will say that we want machine for small farmers. No, to what extent you can go, to what extent small you can go. Then when you go to a very small set, then it doesn't remain efficient, it doesn't remain economical. So that also one has to see that what is cost of mechanization and what is the extent of mechanization we can go. World is opening. World has opened already, and because of that, many of the agriculture and agriculture-related commodities, machinery and everybody is free to import from other countries. And because of that, that also poses a challenge. And as far as research is concerned, research and academics, the resources are reducing. Day by day, resources are reducing per capita if you talk. If you talk just absolute in rupee number, then maybe ICR's budget was 3,000 crore few years ago, now it is 9,000 crore. But per capita expenditure, if you see, or per acre expenditure, if you see, or budget you see, that has reduced a lot. Okay? So these are challenges. I will expand on food losses and waste. There are two types of losses, quantitative and qualitative losses. In third world countries, in developing countries, mostly quantitative losses are more, qualitative losses are not considered as loss. Whereas in developed countries, qualitative loss is more, and that is considered to be a bigger challenge. If you see food loss and waste, this is FAO's figure. FAO says that world over, if you are making, the production losses are somewhere 20%, storage losses are somewhere 3%, packing losses are 1%. Rest is wastage, and that is huge. You can see 12 plus 28, 40% is the wastage, and that
nobody is accounted for so far. Nobody is accounted. On 30th October to 1st November, we are having one workshop in Delhi on food loss and wastage for South Asia. That is in collaboration with a German university. And there we will be trying to account for that what is the part of the wastage that we are doing. Losses, we have done the study, 1.5 lakh crore rupees we are losing every year. Wastage probably is twice the material that comes to our plate and thrown away. So today when you go for lunch, please mark my words. Please remember me at that time and try not to waste anything. Okay, so at least if 10-15 people sitting here, even if you have taken the message, this is good for me. So not only this wastage is there, but along with that, there is wastage of the resources that has gone into production of that. Okay, now we have recently done some work that the blue water footprint of the world over, whatever world over is lost, for that production of that loss, 16 times of Satluj river's flow, annual flow. Means 16 years of Satluj flow is wasted in that. If you talk in terms of Narmada, it is 7 years of Narmada's flow is wasted in 1 year. So that much of water loss is there, then at the same time, there is a loss of land resources, carbon footprinting and ozone depletion and all these things. These are the figures I was talking about. CFET conducted this study in 2014. Recently, 2022, NAPCON has conducted the study and they have come out with these figures. If you talk of processing, level of processing, majority of the commodity, there is level of processing is good, especially the durables. Everybody says that processing is very less. I don't agree with that. Everything is actually processed. The people's perception of processing is converting it into a ready-to-eat product. But you don't eat oil seed, you eat oil. You don't eat paddy, you eat rice. You don't eat pulses, you eat dal. So there is processing. And then processing is not only in the mechanization or machined where the product is converted into something. There is primary processing, cleaning, grading, sorting, transportation, primary storage, packaging. So all these things is there. So anything that is coming to your plate cannot be said that it has not been processed. So everything is getting processed. But the issue is these are some of the figures coming from the sector that of organized sector. But on the right side, what is shown, I agree with that the farmer share in these products is good only in case of certain products like pulses and then milk. We can say that a good share farmer is getting. That is because pulses had a very high price compared to rice, wheat and all other commodities. If you see fruits and vegetables, their share is very less. This 30 to 40% in case of fruit is a very rosy picture, I would say. A very bad picture is there in case of perishables. Milk is good because milk is very well organized in almost every sector, every place. In fact, the losses in milk are also less in post-harvest losses. It is just 0.8% loss is there in the milk sector. Because even if milk gets curdled, we are still using it, making something out of it. So because of that, there are not much losses in meat. So post-harvest losses as well as the post-harvest realization or value addition or farmer share, that is very poor in case. Constraint is we don't have right quality of processable raw material. That is one major issue coming out. The industry says that in India, only and only mango is something that is processable. Other than mango, no fruit is processable. Even with higher import duty, they are ready to import orange juice from Brazil, pineapple juice from Philippines, lychee juice from Bangladesh, because the quality of the product is good from that place. Processability is high. That is not in the case of Indian product. So that is one of the challenges for horticultural people to develop those varieties, those cultivars which are processable. This is what yesterday DDG Dr. Jha also highlighted, that
You cannot give solutions. Engineers cannot give solutions, whether they are processing engineers or farm machinery or anything. They cannot give solution for each and every variety and each and every breed. Somewhere they have to fall in line and they have to see that what machinery is available, what processes are available, and based on that, those varieties are to be developed. Seasonal excess and scarcity. Recently we have seen tomatoes. Every year we make hue and cry. We have seen onions. Because of onion, government getting changed. Sahib Singh Verma in Delhi and so many times in other states also. Onion have caused a lot of political turmoil. This is every year. This is for every year, and every year we make hue and cry. So there are at times tomato were sold for 250 rupees a kg, and now they are getting sold for 20 rupees a kg, and maybe next month you will able to buy it for 10 to 15 rupees a kg. So this, especially in case of perishable materials, lot of fluctuation there. High taxation on machinery. Machinery earlier, agriculture machinery was not taxable, especially post-harvest machinery. They are they have to pay taxes, 28% also in certain cases. Complicated administrative and legislative process. So wherever subsidy and all these businesses are there, it is not very easy for a farmer to get those benefits. Food laws are also needs to be streamlined. Interface between institute and stakeholder is very weak. Stakeholder considers that the institutes are like magicians. They should be able to give everything at a very low price or at cost-free basis. On the other hand, institutes think that the farmer is making money or the stakeholders are making money. They should take part into the development process. The developers don't have, the stakeholders don't have patience for that. And then indifference about quality in the system. This we are now trying to, we have one project on from Department of Consumer Affairs in which we are trying to impress upon them that like MSP you are giving, in MSP system there is a cut in the price if the quality is not there. Means moisture content, let us say example of rice. If moisture content of rice is more than 14, they will make a price cut. But if it is less than 14, the trader will not get any benefit. So he is, means even if rice is dried at 12%, he is getting tempted to make it 14% so that he gets a higher value. So these type of things are causing problems. Research and academic impetus is required on modern mechanization, resource conservation, food safety and quality. New generation is now tech savvy, new generation is now nutrition savvy, and you might have observed that even our Prime Minister also nowadays, nobody talks of food security, everybody talks of nutritional security. So we have moved from food security to nutritional security, and because of that, the role of process engineering has become very important. And food safety and quality is of prime concern. Energy packs for mobile use, second generation biofuels, these all things yesterday Dr. Mehta had discussed in lot. So I will go to some of the positives also. We don't have anything, means we don't have only bad things. We have positives. We have very broad crop base. Also, sometimes this becomes a negative for us. We have every type of crop. We have so many varieties within that crop. You talk of rice, there are hundreds of varieties. There are mangoes, there are hundreds of varieties. Now, that is one good thing for us, but it becomes a challenge because when you develop any machinery, then you have to develop, you have to give sufficient leverage into that so that it can process different cultivars or it can process different crops. Framework of mechanization is in place, fairly good. Madhya Pradesh is very lucky to have it. We are a very large market. That is why everybody is getting attracted towards. Excellent mobile phones network is there. Extension of any information is now very quite easy. And if you can contact so many people through mobile phones, through internet, over mobile phones. And there are wide spectrum of varieties. ICAR, CSIR, Ministry of Food Processing Industries, CAUs, SAUs, everybody has developed so many type of things, so many prototypes are available. You just go around in this college itself and you will find at least 10, 25 prototypes very ready, which are transferable, but not getting transferred.
Why? We have to think ourselves. But the general approach is we need to go for appropriate mechanization. We can't blindly follow Americas or Australia or other countries. We can't follow Taiwan and other countries also, where maybe the population density is less, where the resources are different type of thing, challenges are different. So we can't go for very heavy machinery. We can't go for very small machines also. They will not be sufficiently economical. On-farm primary processing has to be promoted very much. It is must. Quality of any food product cannot be improved. It can be retained. Whatever has come out from the plant can be retained if you are using appropriate processing methods, but it cannot be improved. So on-farm mechanization, on-farm processing is must, imperative. If that is done, then majority of the quality issues, majority of the loss issues can be addressed there. On and off-farm value addition, we have seen recently when the Prime Minister gave us a challenge to doubling the farmer's income. So in that case, whenever we studied, we saw that based on agriculture, farmer income cannot be doubled. If the farmer is going for processing, if the farmer is going from some other activity along with agriculture, then only his income can be doubled or tripled or multiple times. So processing is a very good activity for improving the farmer's income. Then supporting infrastructure, human resource and finance is necessary. Human resource development at the same time, like Engineer Chaudhary was telling yesterday, that you give machinery in the farming area, but if there is no mechanic to repair it, there is no operator to run that machine, so that becomes very difficult. Recently we have seen that these fortified rice kernel plants have been established in Punjab, lot of plants, but they don't have any operator for that. So they are running it on trial and error basis and learning themselves. So these type of things, for that, agricultural colleges, agricultural engineering colleges can play a very vital role and develop the skilled manpower for operations of, say, rice mill, for dal mill, for different type of processing. You can develop maybe certificate courses or something. Okay. Now coming to some newer technologies. So this was the part one where I was trying to just give you an overview of where we stand in the processing sector. But what we are looking at beyond this, so automation and new technology trends, some of the innovative operations, processing mostly we are looking at controlling the abiotic factors like physical, chemical or physiological factors. So based on these three factors, control of these three factors, we want to enhance the shelf life, we want to retain the quality, we want to ensure the safety of products. Okay. So we started somewhere at the top left corner, coal tar drum bin. Somewhere in 1960s or something, coal tar drums were burnt and painted and then they were used for grain storage. It was found that they are fairly better than pakka kothi or some kind of storage structures. Then we moved to something like aeration in bin. Then at the same time, FCI and CWC, they were building the structures in which covered storage structures, and on the right bottom you can see they were moving towards an intermediate arrangement of cap, that cover and plinth kind of structures. Although losses are tremendous in this, but at least they are better than keeping material in open. So, but now the trend is going towards the metallic bins or larger silos, as you can see on the left side. Larger silos, Adani and so many other are, even FCI is coming out with these type of bulk storage structures where the cost of storage is very competitive. Although it is difficult to store some of the commodities, like even in case of rice, it has been found that storage of rice in bulk is very it creates a lot of loss, especially for long grain rice. Then coming to horticultural sectors, evaporative cooling and then cold storage is the order of the day. A lot of cold storages are getting installed, and the challenge in cold storage is also there because of the mixed commodity. I'll just narrate a very funny incident. One of my friends, he contacted me. He said, in my cold storage I kept eggs and apples together, and all my eggs have taken the
fragrance of apple. So what should I do? I said, sell your eggs at a premium price, saying that it is a apple flavored eggs. So that is a funny side of it. I don't know what did he do later. But the issue is farmers or cold storage people are practicing the cold mixed storage, and because of that there are losses. They are spending money on cold storage, but still there are losses. So as an agricultural engineer, we have to come out with appropriate protocol. We have to come out with appropriate solutions which can be given for the cold storage, even for the bulk storage. Bulk storage of rice is one of the challenge. We have to give a solution to that. These are silo bags or these hermetic storages. Some solutions have come, but their cost and labor involvement is slightly high. A similar work we did in CII Bhopal sometimes back, flexible vacuum hermetic storage. This has proved to be a very excellent solution, although at present expensive. But these type of hermetic storage, along with vacuum, along with some kind of sensor. So on the right bottom, you can see we developed a sensor rod, and that was giving signals on our mobile phone, the condition of the grain. And because of that, if appropriate monitoring is done, then you can have a very long shelf life. Grain protection, there are basically grain, not only grain, but even otherwise also other commodities. Major two things are there, thermal and non-thermal things. I will very quickly go through some of the researchable issues. Microwave and radio frequency are the upcoming for quite some time. There are some good solutions coming for drying as well as for treatment using microwave and radio frequency, but still we have a long way to go. This is one of the microwave-based disinfestation system that CFET has developed in collaboration with an industry. And this is especially suitable for rice. When you buy very expensive rice and still you find that there are insects inside. So it's not that the rice miller is careless, but the issue is there are insect eggs on the rice that gets hatched during the transportation and rest of the period, and because of that insects come. But we have developed this system which will ensure that there would be zero insect inside a bag. So this is the one thing. Then infrared and ohmic heating are there for quite some time, but practical solution, field-worthy solutions are yet to come. Ohmic heating is one of the challenges which probably won't see practical use. At present, I don't see it much. Much of academic is also done, but I haven't seen anything on ohmic heating as a practical solution. Coming to irradiation, irradiation is proven to be very useful in certain commodities, although they have installed plants in Gujarat and Maharashtra for treatment of onions in Lasalgaon and some other places. But for commodities like, but these plants are making profit through commodities like spices, nuts, and then medical equipment and medical accessories. So for commodities like onion and all bulk commodities, it is not proving to be very economical. Transportation cost comes out to be much more than the cost of treatment. But it is useful, definitely very useful technology and effective technology. Coming to perishables, this is a conceived cold chain. Cold chain is there, but at present the biggest challenge in cold chain is maintenance of cold chain. Breakage of cold chain is taking place very often, and most of the operators, because the truck drivers and these type of people, even the cold store operators, they tend to get tempted to break the cold chain and make some extra profit. So for that, we have been working, and radio frequency identification devices have been developed, and we are still working on some of these things. Recently in G20 summit, we showed how the banana value chain can be monitored using our RFID based device. And this device can not only give you the condition of the crop being handled, but where it is located, where it is stopped, where it is stored for how many days, and just because of that you can monitor and you can do the traceability also through this IoT system.
These are sensing and separation systems recently developed. On the left side, this is a typical color sorter used in rice mills and some other commodities. At present, our challenge as in India is that we don't have it completely made in India. Although these things are being supplied as a Make in India, with a Make in India logo, but these things are basically coming as a knockdown kits from Italy or China or some other countries, and we are simply assembling it here. Some assembling or some starting we have done at CIE as well as at CFET Ludhiana. Color sorting, image-based color sorting, sensor-based color sorting, separation. So some attempts have been started. Some startups have also come. They are also developing these type of things. But still we need to go a long way in this. X-ray detection, this work, initially I worked in 2000 on this, and then during 2008 to 12 we developed this X-ray detection system. At present, you can see that there are a lot of X-ray detection system in transportation business, in guest houses, in railway stations. So all these things are now, they are getting available into market. And recently, with our help, one entrepreneur in Karnataka, he developed one X-ray detection system for gherkins. So gherkins which are getting exported, for that finding if there are insects, one X-ray detection system has been developed. Other than that, radiation-based computed tomography, magnetic resonance imaging, emission imaging, infrared imaging, all these things have been worked in a research and academic domain, and I would urge that some of you take these things forward, and I will be very happy to help you out with all these technologies. Quality sensing system for packaged mushroom, this is a development from CFET Ludhiana, wherein gas-based sensing or a kind of a electronic nose has been developed. Then for mushroom, we have image-based system in which you can assess the freshness of mushroom. Like on the right bottom, you can see harvested, how you can tell from the color of mushroom that how many, it has been harvested how many days before. So this uses artificial intelligence and then image processing algorithms, and based on that, you can predict the freshness of mushroom. Hyperspectral imaging is another branch in which you can predict the quality and safety of a product. This is for quality, and this is another work we have done for safety of maize, and also we did it on peanuts, on which we could detect the aflatoxins on these products before they are visible to naked eye. Coming to thermal imaging is another technique. Yesterday, Dr. Mehta showed for crop surveillance they are using, but for product quality, even for the process quality, or the, like you can see the center, when cookies are getting baked, how the heat penetrates into that. That is one thing. I gave one solution to one cold storage person. There are thermal cameras coming which can be mounted on mobile phones. I told him that you put it on your mobile phone and use it to find out the hotspots in your cold store, and accordingly you can decide which commodity to be stored at which place. So these type of solutions are coming, some of coming impromptu, but there is a lot of scope of research to go beyond that. This is another work, acoustic detection. This has been done at CI Bhopal under my guidance. Based on the sound generated by insect inside the storage bin, you can predict, when you process the sound, you can predict the insect density, and based on that you can decide how much to be fumigated and whether to fumigate or not. So these are things. Then coming to artificial intelligence and robotics, which is a buzzword now, everybody is thinking for this. We also have done some work, but remember one thing, that artificial intelligence done blindly is natural stupidity. So one has to understand what is going beyond it. Many people from computer science background and electronics, they are approaching us for getting validated or getting tested their product. And when I ask them what goes in the artificial intelligence part of this, they don't know anything. It's simply like a machine. You put something, something is coming out that seems to be good and you are accepting it. So artificial intelligence without your intervention or knowledge is just natural stupidity.
Then a new thing is coming in between is called cobotics, collaborative robotics. So robot is doing something that requires some kind of power, some kind of drudgery may be involved in that, but some controls, some intelligence of human being is also used in that. So this cobotics is coming in sorting of this thing. Next is very small robots, mini robots, which can just go inside the grains bin and they can just traverse like an insect, and then they will give you information, okay, this is the area where moisture content is more, this is the area where humidity is more, this is where gases are getting emitted or something. So these mini robots, that is one of the possibilities for us to work on. This is, let me see, I think it will work. This is a picking robot that we recently developed in collaboration with CDEC. Unfortunately, this is not working. We gave the artificial intelligence input. We developed the complete algorithm for detecting or locating the food, locating the fruit on that. And then this CDEC Kolkata has developed the hardware. This should have run as a film, but no, it's not running. Okay, so this was a video where it was picking up. This is a vision guided robot. Then coming to other things which have been developed already and which are under development also. I think I talked about this sensor. I talked about this hyperspectral imaging. I talked about mushrooms. This is a ripening or maturity measurement device. At present, very expensive. We have to see how robustly and how economically we can develop it. 3D printing is another, 3D food printing is another domain that we have now started working. Developing a particular food, the vision is that there would be a vending machine where you show your prescription by dietitian that I want this much carbohydrate, I want this much energy, I want sugar to be less than this, I want fat to be less than this, and then I want some structure which has a texture like idli. So it will choose product, it will print the product and it will deliver it to you. So that is a long-term vision. For that we have started working this way. Our challenge at present is not only development of the machine but also development of the ink, the so-called, since it is printer, so whatever material goes inside that can be called as ink. Developing that ink, that should be stable, that should be uniform. So that also is a big challenge, and those from food science background, they can join hands for developing these inks for us. Sensing for food quality, and I think I have talked already. Artificial biosensing is the thing. See, ultimately the best machine we consider is the human body. All the senses are there, all the 6 senses are there, and this human body, we are, as a scientist, we are trying to mimic human body and go slightly beyond the limits of human body. So you cannot work at 55 degrees Celsius or 60 degrees Celsius. So I want to develop an artificial sensor that can work in that area. You cannot work for more than 10 hours. I want to develop something, a sensor and mechanism that can work for that long. So these type of things, but ultimate goal is, even artificial intelligence also, ultimate goal is to mimic the human thing. Right? So same thing we are trying to do, and for every senses, tongue, nose, mouth, vision, proprioceptive sense, for everything we have artificial sensors. We are trying to train them to control the quality and ensure safety of a product. This is what we are looking at. The way forward is on-farm quality detection, harvesting with the quality known quality, smart storage, smart machines, edible electronics. You eat something that is made artificially, that finds that diagnosis, and accordingly it releases things into body. Food alternative sources, this is also going to be one of the big thing, that microbes, insect, fungi and so many other sources have to be used if the population is growing and the land is decreasing. So productivity increases also can be a limited extent only. After that, you will have to find alternative sources of food. Quality and safety and traceability is important. Consumer is becoming aware of it. Consumer is ready to pay for this. So that is then, and for supporting, we need to have appropriate policies and we need to have training and capacity building. So we need to train our people. To sum up,
We need to address convenience as well as hygiene. We need to address right sizing and scaling. We need to develop things which are robust. Things which are developed on Beagle board or Arduino and all those things, they are just primary prototypes. They don't work for a long time. So we need to develop technologies which are robust, which can go into the field. We need to develop machines which are versatile. We need to be dynamically updating ourselves and the machines and the development. Cost effective and availability, need to make sure that they are available. Many of our machines, when they come, even for these organizations, these colleges, people come, they see and they will ask, okay, I want this machine, where do I get it? You don't know. Availability has to be ensured before you transfer the technology. Then expertise and infrastructure, whether laboratory development, quality ensuring, all these things. Prototype multiplication, I already talked about availability. Solution is equipment ownership versus custom hiring. In farm machinery, it has been already started, custom hiring center. In processing machines also we can do. In submission on agricultural mechanization, there is a provision to support processing machines also. Not many people are aware of it. Quality and appropriate machines, that is also important. We cannot, especially in food processing sector, now we have to see that the machines we are developing are made of appropriate material. Mild steel for everything will not work. In our workshop, we tend to develop everything in mild steel, and that doesn't work, that doesn't look good, that doesn't impress the people who want to buy it. Sensors and automation in handling and storage, I have been highlighting it again and again. Produce quality and food safety, zero waste. That is secondary agriculture, what Dr. Jha was telling yesterday. We need to see that how do we go for zero waste so that the processor gets the complete value for his thing and we don't disturb the environment also. We need to empower the stakeholders. All the stakeholders need to be pounded again and again about the information. Then only they will get empowered. And then sharing of resources. I made it very bold because this is the order of the day. For doing all these things, you need funds. That is reducing. I told you in the beginning itself. So we need to share the resources, whether intellectual resources, physical resources, financial resources. We have to share these things. Thank you very much. Yeah, thank you, Dr. Nachiket, for very informative lecture, as well as the new developments or the new possibilities in the field of post-harvest processing. You made us aware of that for your informative lecture, and here we are giving you some memorandum. Now, after Dr. Nachiket's lecture, I would like to invite my friend, my classmate, Dr. Sharan Patel. He is a retired professor from IGKVV. He was working as dean. He traveled around whole country in different capacities, and he is having a vast experience in the field of process engineering. So we would like to hear from him. Dr. Sharan Patel, please, sir. ये मिलेट
मिलेट वाला, मिलेट 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 ऊपर वाला. Good morning. Namaskar. Thank you, Dr. Jawaharlal. Chairman sir, co-chairman, reporters, and fellow friends. This is a millet year, International Millet Year. So I thought, let me talk something about millets. And this is the era of startups. Our Government of India and Honorable Prime Minister and even the entire country is talking about the startup entrepreneurship development, because the jobs in the private sector and in the government sector is gradually reducing and will go on reducing. So I thought, कहाँ गए यार, कहाँ से होगा ये? So, okay. Millets, I was talking about millets, that this is the International Year of the Millet. Friends, the millets are, if I am correct, somewhere I have read it, these are the first crop, domesticated, not in India, but in the entire world. To start with the farming and cultivation, the millets we had in our hand, and we learned many things. I mean, the total society learned how to cultivate the crops, how to cultivate the commodities from the millets only. Millets are nothing but the grasses. And later on, the millets, so many millets have been actually identified, and the millets come into our lifestyle. But unfortunately, with the advancement of the technologies and with the advancement of the days and with the advancements of the test and other, the opacity, the millets, we forget the millets, and millets remain as they were, because the millets have been replaced and were replaced with other remunerative crops and other remunerative commodities. So the millets are the small seeded cereals all of you know and consume that food. But later on, internationally, the millets have been said as nutri-cereals. And they have nutri-cereals, because of the nutri-cereals name, they have lot of the capacity and lot of the properties, and because of these properties, the millets, now we are switching up to the millets, and millets are being actually highlighted. So there are many millets, but some of the millets are grown in this area and some of the millets are grown in other parts of the world. In our area, in our India, many millets they are doing very well. One of them is the kodo millet. Madhya Pradesh, Chhattisgarh and part of the Maharashtra, part of Jharkhand, they are famous for kodo millet. Finger millet also, and little millet. These three millets are very much grown in India. Then foxtail millet, barnyard millet, proso millet, pearl millet. They also have the areas, but the areas are not as significant as the other millets are. And the maize, everybody knows about what maize is. The sorghum we have a large area of the sorghum. Oats also, but oats area is also very less. The barley. And these are some of the figures actually I have put in just to make you understand what they look like. The kodo millet, little millet, finger millet, foxtail millet, and how the crop looks like. Actually, I am a teacher, and if I ask my students, many times I ask, have you seen the wheat crop? The student said, no, I have not seen the wheat crop. So that is our status. Dr. Nachiket was talking about the mechanization and all those things, the losses. Losses actually
we do not know what are the losses. And very rightly said, the 28% loss, he said. And our new generation, they do not know. The one grain, the cost of the one grain, they do not know. So what they will know about the loss. So the kodo millet, these are the kodo millet, and this crops look like little millet. And the finger millet is doing very well in India. And the foxtail millet. This banana millet, pearl millet, proso millet, sorghum, jowar. These are just how the crop looks like and how the grain looks like. And this is the data. I have just put the data up to 13th and 14th. But beyond that, the data actually what I had, those were not very, the consistent, and there was a lot of the questions, so I left other data. Because some of the data has not been reported and some of the data are very arrogant. So I did not use that data. But you just see here, what is the area? The area gradually reduced, and it is reduced in 13-14. That has from 53.35 to, it has gone up to 6.82. Now you can see the millet, the importance of the millet and what could be the causes of reducing this area. Now it is a big question. Now the production also. The production that also gradually reduced. But as the area reduced, the productivity yield has gone up because of the interventions made by the agriculture scientists, made by the farmers, made by the stakeholders. Many of them, we all join hand, and because of this, that increase. The finger millet, I am talking about the finger millet. Finger millet is doing very well. It's a wonderful crop. And India is the leader for the finger millet. And here you can see the area also, again it is the same thing, but yield, you can see the yield. From 800, it has gone up to more than double of that. And today, and 21-22, it has gone up to 3,000. It is reported, well reported, but I am not putting that data because of some of the questions. And why the reasons for the low consumption of the millets? Now, the change in the pattern, consumption pattern. Today, if you have got available, the ready-made foods available in the market, so that will be preferred, of course. Then, irrigated area for the wheat and rice cultivation, because those were more remunerative than the millets. So, wheat and rice, that has become the major grain, and those were the major food for about more than 50 or 60% population of world over. And unavailability of the millet. Because why the millets when millets are not being grown, naturally the unavailability or the availability will remain in question, and low yield. That is one of the threat, one of the constraint, one of the cause for it, and dietary habits. Millets, our ancestors, they were using millets as a full food, as a common food. But today, if the millet is served to you, I am sure that 50% of the population would like to have the millet and less demand. That is because of the taste, that is because of the habit, that is because of the, the millets were, somebody told the millets are the food of the poor man. It has also been written in the document. Food, गरीब लोगों का भोजन, ये कहा गया है. This has been said. It is well written, documented. And this resulted in fall in the level of nutrients like vitamin A, proteins, iron and iodine in women and children particularly, leading to malnutrition. So that is one of the, to be underlined. Now, what are the importance? So these are nutritious, very highly nutritious compared to other major grains. Other major grains means if you compare the wheat, rice and maize. And gluten-free. Gluten has become a problem, not in India, but if you go to the upper side, to the US and European countries, the gluten is one of the biggest problem now. It has been noted and it is appearing as a good gluten problem. And now the medical practitioners, they simply write, you have to leave the gluten foods. Non-acid farming, then low glycemic index. The low glycemic index, that is particularly
it is very much suitable for those who are, diabetic patients, not the patients, diabetic. And slower release, because of the low glycemic index, the slower release of the glucose, that it helps, and that makes its importance. And millets are rich source of the minerals like calcium, iron, zinc, phosphorus, magnesium and potassium. And the dietary fiber, vitamins, so many other the properties they have, the therapeutic values, the health benefits, all other properties, the millets are, those are available in the millets. Now the millets are rich in phytochemicals also, tannins, phytosterols, polyphenols and antioxidants. The millets are famous for all those things. The millets can withstand variations in the moisture, temperature and the type of the soils ranging from heavy to sandy. Anywhere it can be grown, or the area where the other remunerative crops are, where the area where the valuable crops cannot be grown. Like the capsicum you cannot grow anywhere. The cauliflower you cannot grow anywhere. But where these crops are not grown, okay, you throw the millet seeds, it will come up. It will come up and it at least you will harvest. And another important point is, if there is no rain, even then you will harvest the millet. Maybe the productivity will be less, but you will harvest the millet. Production, the miracle grains, it has been said, it is also written in the literature. And crops of the future, it is also written. I do not know in future, आप रहेंगे, मैं रहूँगा, नहीं जानता हूँ मैं. But it has been written, the crop of the future. And millets are dual purpose crops. It is cultivated both as food and fodder. That is true. And millets contribute for mitigating the climate change. That is also the climate change. It has become a serious issue, not for us, but for the entire globe. So it is one of the very much suitable crop which can sustain, or which can be capable enough, or which can come as an alternate solution, partially alternate solution to address the climatic change and to mitigate the climatic change. And production of the millets does not depend on use of the chemical fertilizers. That also, in our area from where I belong to, there are areas where the millets are grown, widely grown. That is the second crop of the area. Still today, it is the fertilizer requirement is the minimum in India. Three to 5 times nutritionally superior. It is also available in the literature, and it has been tested than wheat and rice. Then millets are for the people who are fighting with the obesity, risk of hypertension, and the CVDs, diabetes, cancers, and constipation. The millets could be a solution because of their natural fiber, dietary fibers, and low glycemic index. This is a comparison. You can just see rice and wheat. The bottom two lines are rice and wheat, and upper are millet. It is, if you see the nutritional values, it is all comparable, even superior to the wheat and rice. And here the finger millet, it is calcium 344, and the bioavailability of the calcium from millet has been reported to 68 to 72%, which is not possible with the medicines. Calcium. Now the changing scenario, NCD population, non-communicable diseases population is growing, and health conscious. Now people are now thinking towards their health. Maybe because of the education system has become a more penetrative, or the better communication system has been developed, and the health issues and health conscious is being developed now. And surge in consumption, stagnant production, likely shortage of the product, the millet, the produce, the millets, all millets, and likely higher prices, lesser
the crop, lesser the commodity available, definitely the price will be high. That is one of the also constraint. If it is available, openly available in the market and available in quantity, the quantum sufficient quantity, definitely the price will go down because of easily availability and everywhere availability. Because today, if you see, it is available in the production catchment. But if you go to the Bombay, it is, the cost will be, much more than even double or triple. Even if you purchase a rice, millet rice in Raipur or Jabalpur at 80 rupees to 120 rupees kg, if you go to the Bombay and go to the supermarket or any, the trading places, there it will not be less than 250 rupees kg. Then the millet processing, it is all grain, it is grain, so this all those steps are equally involved, are equally required for these grains also, as we need for the rice and wheat or some other, the grains. This is primary processing, it is required, whether you said, Dr. Najiket just said, whatever you do is the processing. If you clean it, if you grade it, if you wash it, that is also processing. Then primary processing, it is must, dehulling is must. May not be for all millets, but the millets which are very common, it is dehulling or removal of the husk is important. Without that, we cannot use, like rice. Rice cannot be used without husk, with the husk. Similarly, the kodo millet cannot be, used. We cannot bring this into our food chain or food system without removal. And it contains 7 layers of the husk, whereas the paddy contains 3 layers only. Here it is 7 layers that is to be removed. And the flour, dehulled grain flour, coarse rava, semolina. These are some of the common, the ways to minimum processing or the primary processing, where with this processing we can bring them into our food preparation. These are some of the machineries. Earlier, gentlemen, I would like to bring to your notice that earlier, since the millets were actually not attended well for the processing and they were ignored, and because of the ignorance, the scientists, researchers, even the engineers and the private industries also, they did not pay attention towards the development of the processing system for the millet. But of late, ICR system, even the universities also, they started doing something for development of the millet processing system. What is the minimum processing requirement? And these are the series of the machines. Like other system, you need the cleaner grader and you need the dehusker. This is the CIA grader, later on modified. And this is another, dehusker. This is a huller type, sharing and both sharing and it's a sharing, basically sharing. All these millets are there. These machines are there. Now it is available in the market. And entrepreneurship development and the trainings can be initiated with minimum establishment cost. This just I want to show you because these machines are available. Just I want to kodo rice. Now this is the kodo after removal of the 3rd layer. In this stage also, earlier with the food pounding, this is the condition. The first one was the condition with whom it was being cooked. Now this kind of the rice is available. Kutki. This is the rice, kutki rice, and the beautiful kutki rice is, the wonderful, and after cooking, you get a sense, the different sense, a different taste, different sensory.
Now the process technology for the composite floor. Composite floor is actually it is very the common word it has become. I do not know whether the composite floor is doing well or it should be taken or it should not be taken. I don't know. But it has been recommended that composite floor is better than a single grain. Nutritive value, this is done only with the wheat and finger millet. But in addition to that, if you want to add something else, because of your taste, because of your choice, because of availability of the third grain, you can very well add. But this is only for the two, and with this two, up to 70% and 30% you can go. With the wheat, wheat should not be less than 70% and finger millet should not be more than 30%. This has been tested by the ethical committee and medical doctors, medical scientists, and this is the fix. And if you want to manipulate, you can manipulate with this 30%. Ragi malt, it is doing miracle in our area where from I am, and even in the other area also this is doing very well, and this is being considered as an energy drink. Ragi malt is being considered as energy drink, and the players, particularly the teenagers and the players, sportsmen, they like it very much, because you can just see here the protein content is reduced, but other things, the phosphorus and energy value 290. Energy value kilocalorie is a 290, and the phosphorus 320. For the players and for the sportsmen, the phosphorus is important, and the calcium is also important. Now you can just see here. And drink. So simple. The malt can be converted into drink. Either you can take it with the milk or even without milk. Some people, particularly the areas where the milk is actually not preferred, there they can take it with the water or with the other juice also. But other juice that contains sugar, that has to be taken care of. That proper replacement should be done. And the ragi flour, only ragi flour. If you are keeping the ragi flour, but the problem with this is ragi flour cannot be kept for more than 45 days. Even 45 days is more. It should not be kept more than 30 days. And the ragi flour is prepared. You can add, combine with any other food, and you can prepare your own recipe. You can prepare your own food. No problem. You can go. Kutki rice. The kutki rice is one of the, actually this was very much ignored, and the Madhya Pradesh area and Chhattisgarh area is famous for kodo and kutki. The kutki, the iron value of the kutki, and some of the universities, they have developed the varieties with higher values of the iron. And this iron, particularly the kutki, is for the calcium and the iron and the fiber for those persons who are, they are sick, for I should not say the sick, the constipation problem. This kutki rice is very much suitable for them. Kodo millet, this kutki chawal and kodo rice. Kodo rice, this is also, it is available in the market. Now it is available in, everywhere in the malls or the stores. Earlier, these were not available. Extruded products. The institutes, many of the institutes, they have developed extruded products. This is one of the combination, finger millet, maize and defatted soya flour. But you can replace maize flour, defatted soya flour, keeping the finger millet or keeping any other millet. But we have tried with finger millet. It is doing very well, and I am very happy to share that kutki extruded product is now available in market, launched by Nestle. Pasta. This is simple machine I am showing. This is also just we have tried the pasta, but it has not been finalized as yet. Extruded products are available.
Then murra means nothing but the popped rice. Kutki and kodo and even finger millet, ragi also. They are very, nicely converted into puffed form, and it is available in the market. It is available in south. If you go to the south side, it is available in the market. Now only thing we have to think and we have to change our tongue. जो जीव है, जीव का स्वाद आप थोड़ा सा बदलना चाहें तो आप इसका कंजम्पशन, if you want to change your food habit, if you want to change the tongue taste, you can enhance the consumption of millet. These are some of the value-added millet products. These are examples: the sorghum grain, foxtail millet, whole bajra. All the process is similar. Only thing we can replace the grain. Foxtail millet, idli mix. It is available. Idli mix, the millet mix, millets, idli, particularly the ragi. It is available in the market. South, if you go to the south side, it is available. You just put an order that I want idli, ragi idli. He'll supply. आप हमारे बस्तर में चले जाएं. If you go to Bastar, it is available. Value-added products of the millets, dosa mix. It is available in the market, and of long, spending so many years and so many, the experiments. The recipes have been finalized, and it is being liked, acceptable. It has become acceptable. Ragi papad. This is also available in the market, ragi papad. But the difficult part is this: if you launch this ragi papad in Jabalpur or in Mumbai, it is very difficult. But if it is launched in south side, immediately it's a hot cake for them. So the question is that how to encourage or how to enhance the consumption of millets. That is a big question, because of the forward linkage and backward linkage. That both are important. Without the forward and backward linkage, nothing can be done. Bakery products. Bakery products are also available. If you go to the south side, everywhere it is available. Even in our Chhattisgarh also it is available. Then challenges. What are the challenges? I said acceptability. That is the biggest challenge, and convenient form. To some extent, we have been able to bring all these millets into convenient form. Until unless it is available in the convenient form, nothing will go in the kitchen. That will remain in the market. That will remain in the store. If it is readily available rice, of course, somebody will purchase and somebody will cook it. But if it is available in the form of kodo grain, it will not be sold. It is very difficult to sell out. It is very difficult to sell out. आप धान नहीं खरीदते. You cannot. You will not purchase the paddy. You will purchase the rice. Similarly, if there is no atta chakki, you will not purchase wheat. But now the system has been changed. If it is available in the form of wheat flour, तो कौन जाएगा आटा चक्की? So that is one of the things. That is the concept, and that is the changing scenario, changing habit, and that has to be addressed by us. That has to be addressed by us, and we are the person. Nobody else will come to work for us. Americans will not come to us. It is we. It is you. It is we, and we have to work. Then location. Earlier these were produced and these were remained constrained in the production catchment. But later on, because of after minimal processing or after primary processing, now the shift of the grains and availability of these grains or these commodities are excelling towards the expanded market from the niche area. So that is one of the things. And
I am sure, and with the time and hopefully, if this consciousness spirit remains same in the society, definitely we will be able to change the food habits and encourage the consumption of millets, and particularly for some foods, particularly for some time, and production of different age, a product of for different age group. Like today, kurkure is for the children. Similarly, we have to try the different type of the food products to be prepared so that a child is also attracted, the teenagers will also attracted, an age-old person will also be attracted. So that is the question, and the works needs, it is the time to work on this area, and production and productivity. It is a time now that we have to pay attention to increase the production and to bring more area under cultivation and to enhance the productivity as well. And these are some of the machine manufacturers. Thank you very much. And gentlemen, it is very important where the millets are being grown. The processing should be done in the production catchment where it is being grown. Then only it will be economical and it will be helpful for commercialization and better for enterprise or entrepreneurship development. Otherwise, it will remain as such as it was earlier. It is only hardly 6 to 7 years that people have paid attention and people are working towards the millet production, productivity, processing, consumption and its enhancement. Thank you very much. Thank you, sir. We have developed, and sir, you missed, Dr. Chairman, sir, you did not visit Kanker. We have established a very, we have developed a very, actually with a long effort, with hardship, we have developed 1 ton per hour capacity millet processing unit in the private sector. Thank you. डॉक्टर शरण पटेल सर को धन्यवाद देते हैं और इनका लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा मिलेट्स के बारे में और पटेल सर को यहाँ पर स्पेशल लेक्चर देने और यहाँ आने के लिए एक स्मृति चिन्ह कॉलेज की तरफ से कन्वेंशन की तरफ से प्रदान करते हैं। समय कम है, स्पीकर ज़्यादा हैं, तो इसलिए
जो भी अब यहाँ पर अपना स्पीच देने आएंगे वो टाइम को थोड़ा शॉर्टन करेंगे, से 5 to 6 मिनट्स में अपने स्पीच को, क्योंकि चेयरमैन सर को जल्दी जाना भी है, तो उनके टाइम को देखते हुए सबसे पहले मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर SK जैन दापोली से, वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। आपका प्रेजेंटेशन है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओपन रूफ मैकेनिज्म फॉर ग्रीन हाउस, सो गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव एंड आई रिक्वेस्ट डॉक्टर SK जैन प्लीज कम एंड डिलीवर यू। Respected Chairman Sir, Co-Chairman Sir, and all the honorable delegates came for this seminar. I am going to present the title of this is the Design and Development of Open Roof Mechanism for Greenhouse. The objectives were to develop the mechanism for opening the roof, and second is to observe the temperature and relative humidity inside the greenhouses. As we know that there is very much changes in the climate. Here is in all over India also changes are there, but here the sample is for Maharashtra, that in central plains tropical monsoon climate is there, rainy season is 1181, in cold days or months, that is during January, the temperature is from 12 to 25 degrees centigrade, while in summers it goes up to 40 to 45 degrees centigrade. And if we come down for Konkan region, again hot and humid climate is there. Humidity is very high. Rainy season, rainfall is 25 to 3500 mm. In winter it is 20 to 30 degrees centigrade, and in summer it goes up to 32 to 40 degrees centigrade. Also the diurnal climate fluctuates many times, and that's why due to this, instead of open field cultivation, the farmer prefer to grow it in the greenhouses. But if we talk about the totally automatic greenhouses, then they are very costly. So that's why if we think of small and marginal farmers, then naturally ventilated fixed type of conventional greenhouses are there, which are generally erected by the farmers, and also subsidy is given by the government. But here we know that heat stroke affects crop badly as temperature goes up and up in the conventional greenhouses, isn't it? Whereas in open roof greenhouse, the inside temperature remains close to the outside one. After some time, in the fixed type of greenhouses, soil needs disinfection, and again it costs, and that's why formaldehyde and other liquids has to be spread over the whole area, and the soil has to be disinfected. But in the open roof greenhouse, soil solarization can be done, and that's why automatically without any cost that can be done. Insufficient sunlight is there due to algae growth on the UV stabilized plastic polyethylene, whereas in open roof you will get the proper sunlight. So proper ventilation and proper photosynthesis are the benefits for this open roof greenhouse. Because high humidity is there inside the greenhouse, that's why pest infestation may take place. And if once infestation has taken place, then due to the enclosed space, it spreads very fast. And in the open roof, the infestation can be controlled at the earliest stage. Ventilation is low in the fixed type, and it will be more in the open roof greenhouses. To control the environmental parameters, generally we have to make the taller greenhouses, and which leads to wastage in the metal cost, labor, etc. Whereas if open roof greenhouse is there, then lesser height of the structures can be given, which will give you the same or higher profits. Maintenance cost is more in the fixed ones, and because you have to open the curtains, close the curtains,
and cleaning also requires because they are tall. And here in the open roof type, maintenance cost will be less. If sunlight is less in the fixed type of greenhouses, then the plant goes starves for the sunlight, and that's why thin and long stems are there. But if sunlight is proper, then thick and short stem plants will be developed. Roof curtains on the top are needed in this fixed type, because when temperature goes high, then we have to close that roof curtains. Whereas in the open roof, these are not needed. This is the genesis behind that to take this project. And such type of mechanism is there of open roof. Here is the motor, DC motor is there, and this is the open roof which is open 50%. Okay, and it could be closed by opening and closing the switches. So these are the formulas for designing the greenhouse. Wind speed we have to design first of all, then wind pressure from that, then wind load is predominant in Konkan area, that's why it has been considered. Then design of purlins, roof trusses, and all these loads has to be considered: dead load, live load, wind load, and design of rafter, tie and all that. Design of columns has to be done for foundation also, and then we got the some values for that, and according to that it has been erected. So the size is generally between 25 mm of the pipes to 32 mm of the pipes was there, which we have determined, and all these are the values. And here is the isometric view of that. A small greenhouse of 7 by 4 meter was made, having 28 meter square, and covering was again this thing, UV stabilized, this 200 micron polythene film. These are the components. The motor was there, DC motor. It requires DC drive to run. Dr. Jain, your time. Short. These are the pictures. These are for the open roof and these are for the conventional. Here is the mechanism. It is closed now. This is here. It is the first one. It is a closed roof and open one. Side views. 4 treatments were there. Only side ventilation for the generation of data. I have taken this. Side ventilation open, side and roof open, side and roof closed, and open roof according to the requirement of the temperature and humidity. And 5th treatment was the ambient one. So we got very good results, encouraging results. So in the open roof, that was in general, generally for the plant 17 degree to 25 degree centigrade is sufficient, or it is appropriate or optimum. While in conventional it goes up to this much, 43 degree, and it hampers the plant growth. And very bad condition is there in the polytunnels. Nursery Nagar it is called, Dapoli. So many nurseries are there for mango and cashew, and they are grown in the polytunnels, those nursery plants. But there the temperature rises up to 58 degrees centigrade, while outside it is. So all these were the data. Here we can see the difference between the temperature and this thing. Ji sir. Ji. So within 17 seconds, the roof can be closed or open, and we got better this thing, sir. Thank you. Sir, one second. So here it is operating. On the both sides it opens or closes. As per the design, 53 watt was required for this, but the motor used was 0.25 HP, and Okay, thank you. I think. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. I know everybody has very interesting work, but myself and the other speakers, we took much of time. Almost 1 hour we took, and that is a tax you have to pay, other speakers. Okay, so I am calling the next speaker, Sheshrao Kautkar from ICR Circuit, Mumbai. He will be talking on silage from green cotton biomass, an alternative source of animal feed. Please limit yourself to 5 minutes. Yes.
Honorable Chairman, Co-Chairman, and all the delegates present in the hall. Very good afternoon to all of you. Myself, Dr. Sesharao Kautkar, and I will be presenting green cotton biomass, an alternative source of animal feed. Next thing. Okay, thank you. So we proudly say every year that we are largest producer of milk in the world. We are largest producer of milk in the world, and that is due to the vast availability of livestock of our country. So we have almost 535 million of livestock population according to the recently conducted 20th census of the country. And if you see the fodder availability and requirement of this livestock, we are lacking presently. The required fodder is around 830 million ton, and presently availability is 734 million ton. So we are lacking 11, 23 and 28% of green, dry fodder and concentrate respectively. There are many reasons behind this. Because of pressure of producing food grains, of course we have to fulfill food requirement of our population also. So due to that, what is happening, Anna Pratha, which is a traditional practice followed in the Bundelkhand region, particularly of our country, which consists of some districts of Uttar Pradesh as well as of Madhya Pradesh. So what happens is Anna Pratha, the animals, particularly cows, are simply thrown to, left to the road without feeding anything to them. So this Anna Pratha itself is a big topic to discuss, in which these cows, animals are eating papers, clothes, plastic, junk, trash and whatnot, whatever they are getting on the road because of lack of feed availability. And nowadays we are seeing this type of news very frequently, maybe on newspaper, maybe on YouTube channel, maybe in the news channels, that this much of amount of plastic is found in the cow's stomach. At one side we are telling that Gau Mata, we are telling that this is our Gaur Mata, and this is, and other side this is the reality, this is the practical reality also. Okay. So this is one side. The second side is the green cotton biomass. This is nothing but the green portion of the cotton plant. And due to several reasons, maybe infestation, pest infestation, maybe because of picking practices, this plant at green condition, which is not dried, is being harvested after third or second picking, and it is going waste. You may be aware that cotton stalks are used for various purposes, briquetting and palleting, but green stalk presently should not at all be used for any purpose. These are some of the pictures and news of how this green cotton biomass is going waste, and which is being liked by animal for their consumption also. So one of the way to effectively utilize this green cotton biomass and to fulfill the feed requirement of animal is to preparation of silage, and which is nothing but the preserved green forage by fermentation process. So it has several advantages. The silage has several advantages. So with this particular background, we made an hypothesis so that this green cotton biomass which is going waste, can we use it for formulation of silage which will fulfill the nutritional requirement of animal feed. And with this objective, we formulate a methodology that we have taken green cotton biomass chopping, we have added some additives, molasses and urea mixed, and we allowed this anaerobic fermentation and evaluated the quality of that silage. So these are the experimental trials conducted at the farmer's field, where we have taken cotton biomass, which the farmers were already planned to uproot the biomass in the field itself. And we used that for silage making, and we did analysis in terms of physical assessment. We have seen color, flavor, fungal contamination and texture, and we took 2 treatments. So we found that when green cotton biomass treated with urea and molasses produces silage with acceptable physical characteristics here. Again, we have conducted some chemical analysis also, where moisture content, ash and protein has been determined, and there also protein content in the treated silage was increased due to addition of feed grade urea. Microbial analysis was also done, and it was found that lactobacillus count, which is the feasible or desirable lactic acid bacteria in fermenting this silage, so that was also increased, and with 0 fungal contamination. So in conclusion, we can
we can conclude here that this green cotton biomass, which otherwise going waste at field, can be utilized as a good resource for animal feed in terms of nutritional silage. This is being harvested at January, in the month of January, and if silage in the month of January can be available in the month of subsequent summer season in the form of animal feed. So thank you so much. Thank you all. These are the references. Thank you. Thank you for keeping the time also. So from silage we move to sweet corn. We have Ankit Bharti talking on proximity remote sensing, a paradigm shift for sweet corn post-harvest quality analysis. Ankit Bharti from JNKVB? Not there. Okay. Then Dr. A.K. Gupta, effect of drying method on quality attributes of pudina leaves. Good afternoon, sir. Today I am going to present the effect of drying methods on the quality attributes of pudina leaves. So pudina or mint is a perennial herb, and it contains a lot of vitamins and rich in several minerals. Pudina leaves are used widely throughout the world as an important medicinal plant, and one of the most striking or valuable product that we can obtain from the pudina leaves is its oil, because it contains essential oils, and mostly because of its component such as menthol and carbones. Probably the one of the method for long storage of pudina leaves, because it contains a very limited shelf life. Drying is the most widely used primary processing methods, and most common when we dry a commodity having a chlorophyll, the most common change that affect the quality is the change in colors. So keeping in view different drying methods were tried to obtain the pudina leaves at a moisture content that can be stored for a longer period of time. So for that purpose, the fresh pudina leaves were procured from the local market, and these pudina leaves were dried using sun drying, shade drying, tray drying and vacuum drying methods. Sun drying and shade drying was carried out in natural convection condition, while the tray drying, it was carried at 40, 45, 50, 55 and 60 degree temperature under 3 airflow rates, that is 0.5, 1.0 and 1.5 meter per second. And for vacuum drying, the same temperatures were taken, and the constant vacuum was maintained, that was 650 plus minus 20 mm of mercury. So this is the work plan. 4 methods were adopted for drying. Temperature were 40, 45, 50, 55, 60 degrees Celsius. Airflow rates are given below, like that. So the moisture content of the fresh pudina leaves was determined by standard AOC method. The bulk density was also determined, and leaf surface area, because this is a parameter that affects the drying rate and the amount of moisture that will be obtained as the final moisture. Hunter colorimeter was used for measuring the change in color values, and oil content was measured by hydrodistillation method using the Clevenger apparatus. So results are as follows. The average moisture content was around 664.64% dry basis. The bulk density of pudina leaf was 49.21 kg per meter cube, and 20 pudina leaves were selected randomly to determine the surface area, and it was found to be 5.434 centimeters square. So the pudina leaves were dried using the selected methods, and the results obtained are as follows. This is the moisture depletion curve under the sun drying, where you can see that approximately 6 hours time was required to obtain the desired moisture content. This is the drying rate under the sun drying conditions. Similarly, under shade drying conditions, this is the moisture depletion, and this is the drying rate curve for shade drying of pudina leaves. This is the moisture depletion and drying rate for the vacuum drying
of the pudina leaves, which was conducted at 40, 45, 50, 55 and 60 degrees Celsius with a constant vacuum. This is the moisture depletion for the drying. This is the drying rate curve for the vacuum drying. Similarly, the moisture depletion and drying rate for the hot air tray drying was also conducted, and the results are as below. The Hunter color lab was used to find out the color values of the dried and fresh pudina leaves, and these are depicted here. LAV values are shown here for sun drying and shade drying respectively. This is the Hunter color value for the dried and fresh pudina leaves under the hot air tray drying at different air flow rates. This is the for the vacuum oven drying, which was conducted at the selected temperature condition and at selected vacuum condition. This is the essential oil content which we obtained from the dried pudina leaves from shade, sun and hot air tray drying and vacuum drying. The conclusion is that the moisture content of the fresh pudina leaves was 464.64% dry basis. The bulk density and surface area was 49.216 kilogram per cubic meter and 5.434 square centimeter respectively. The sun drying, for the sun drying, the initial moisture content of the pudina was 444.84% dry basis and final moisture content was 8.89%, and total drying time was 360 minutes. It was recorded. Under shade drying, the total drying time was 720 minutes. It means there was a marked increase. Basically, Dr. Gupta, please one time. Okay. So I will come to the. Basically, the hot air tray drying for constant air flow rate and rate of water removed from the pudina leaves increased with increase in drying temperature. The maximum rate of moisture removal was obtained at 1.5 meter per second air flow rate. The maximum color loss was observed under vacuum drying carried out at 60 degrees Celsius temperature. The best quality product was obtained under the shade drying method. The maximum oil content loss was observed under hot air tray drying carried out at 60 degree air temperature. The maximum oil content retention was observed under the shade drying. So the best quality dried pudina leaves in terms of color and oil content retention was obtained by using the shade drying. Thank you. All right, thank you, Dr. Gupta. Thank you very much. Now to proceed, I think we have 4 more papers. Development of wet green gram splits continuous dehuller. V.D. Sangekar from PDKV Akola. I think he is not here. Then Mahendra Daheria from JNKV Jabalpur, grading of tomato by zero energy multi-fruit grader. I will request the speaker to skip introduction part, come to what you have done, and based on that, what type of conclusions or good results you have come out. Good afternoon, sir. Today I am here to present grading of tomato by zero energy multi-fruit grader. Grading is Good afternoon, sir. Today I am here to present grading of tomato by zero energy multi-fruit grader. Next, there is next. Okay. Thank you. Grading is defined as the classification of clean product into various quality fraction. Material and method. The present investigation entitled Grading of Tomato by Zero Energy Multi-Fruit Grader was conducted during my M.Tech research work
2015 to 2017. Plan of work. There is a types of vegetable. I took tomato. There is a feed hopper angle 20, 30 and 40. Separating trough angle 6, 9 and 12. Size of grading in 3 levels. Local variety I took. Location COE JNKV Jabalpur. This is a fruit grader I used for grading of vegetables. Especially it's designed for the grading of guava, moshambi and other fruits. But I perform it to grading of vegetables. Its capacity of 1200 kg per hour, weight 63 kg and dimension. Material used MS and GI. Current cost of machine 20,000 around. Description of manually operated multi-fruit grader. This is a manually operated multi-fruit grader. The main component of multi-fruit grader includes feed trough, intermediate hopper, separating trough, collecting platform and main frame. Multi-fruit grader is designed on the principle of size basis and it's tested for the guava, mosambi and orange. Multi-fruit grader is also an adjustable multi-fruit grader which can be adjusted for a variety of spherical and oval-shaped fruits. Multi-fruit grader can separate as small as 50 mm size and as larger as 130 mm fruits. Principle of operation of the manually operated zero energy multi-fruit grader. Fruits were fed into the feed trough in batches. The position of baffles was decided on the basis of fruits and their rolling on the surface. Fruits were conveyed from feed trough to separating trough intermediate hopper which is attached to the main frame. Feed hopper angle is responsible to manage the capacity of machine. Separating trough angle is responsible to manage the grading performance of machine. Size of grading slit may be adjusted to permit grading of fruits and vegetables in different size. This is a formula: grading efficiency and grading capacity and damage percentage. Result in discussion. The efficiency at slope of feed hopper 20, 30 and 40 was 72.45, 71.60 and 68.45 respectively. Higher slope resulted in fast rolling of vegetables, whereas lower slope resisted the free flowing of vegetables. The efficiency was maximum at a slope of separating trough and 9 degrees. Tomato. Separating this here are 3 basic separating trough angle and feed hopper angle. First 6 degree feed hopper angle was 20 and efficiency was 63.13 and separating trough angle 6 and feed hopper angle is 30 and efficiency was 66.54. as is it. The maximum we found the slow types of crops tomato. Here the diagram of variation of effectiveness of grading with different feed hopper angle 6 degree, 9 degree and 12 degree separating trough angle. Conclusion. In the proposed work, tomato was separated by the fruit grader at 3 different inclination of feed hopper combined with 3 separating trough inclination for each inclination of feed hopper. We found that at a slope of 9 degree, the maximum separation was 72.45 for tomato, feed rate 150 kg per hour constant for tomato, and the maximum effectiveness was obtained at a clearance between separating trough 55.5 centimeter. Thank you, Mahendra Daheria. Thanks for a nice presentation. And for a master's level work, this is quite appreciable. Thank you. Unfortunately, I will have to leave because I have to catch a flight. So I'll request Dr. Mohan Singh to continue. Remaining 3 more papers are there. Aradhana Patel from Medicaps, effect of ohmic heating, then studies on physical properties on rice varieties. Sandeep Kumar and one more additional paper has been there. Artificial Intelligence and Internet of Things by Dr. Goel, S.K. Goel. So I'm sorry I will be missing your presentations, but I have to leave. All the best to all of you. Thank you.
बिफोर डॉक्टर नचिकेत जो लीव, ये यहाँ से कॉलेज से एक आपने शेयर किया है, तो आपको एक स्मृति चिन्ह यहाँ से भेंट करना चाहते हैं। अरे सर, वो आपका नीट लेक्चर का स्टार्ट इधर Okay, so let us begin. Aradhana, you start your presentation. Good afternoon to all respected teachers, my colleagues, seniors and juniors. I am going to deliver an exploratory study on the ohmic heating for head rice recovery. We all know rice is a very important crop and staple food of the India. And during the milling process, there is many losses like hull bran germs, etc. So we can reduce these losses by getting the gelatinization. So for getting the gelatinization, there is the process of the parboiling. Parboiling is a hydrothermal treatment of the paddy, and in this treatment there is a three process: soaking, steaming and drying. And in the soaking process there is a rice from the starch gets water and then swell, and steaming, in the steaming process starch gelatinized, and in the drying we get dried that gelatinized things. And what are the main reasons of the parboiling? So here some reviews are available. By the parboiling we can increase the milling yields, and in the milling process we can also reduce the broken percent. And by in the parboiling process there should not be time increasing, because if there is a more time, there is the chances for the insect and mold. So I am using here ohmic heating method for the parboiling. So what is the principle of the ohmic heating? So ohmic heating is works on the principle of the Ohm's law, that is V proportional to I. V is the voltage, I is the current, and R is the resistance. And in this system I have a concept of the ohmic heating. In the concept there is this is the insulator type of system. So here two electrodes are available with the attach of insulator caps, and insulator tube work like a chamber. So when we apply the power, food gets heated by the application of the heat, electrical heat. So in the traditional, in the industrial, we use the boiler for the parboiling, and for operating the boiler there is also required a person for maintaining the maintenance charge is also high there. So these all things we can eliminate by the using of the ohmic heating system. Here we can save the cost of the milling things. And for this concept I have made ohmic heating system. In this system there is a multimeter function available, and multi-function meter, and also temperature controller is available, and temperature sensor is available for the
checking the temperature of the product. So process, I have used paddy, MTU 1010 variety of the paddy, and taken 1:3 paddy and water ratio, and I took an independent variable and dependent variable. And the independent variable, different voltage gradients used, and temperature up to 96 degrees centigrade used, and in the dependent variable I have checked milling quality, milling efficiency, head rice recovery, broken rice percent, and also I have used checked process time of the parboiling by using of this system. Findings were milling efficiency. We can see below the table. Milling efficiency of the raw paddy was 73.35%, and head rice was 61.50, and broken rice percent was 38%. So by using of the different voltage gradients, we can see in the fifth serial number 5th 17.14 voltage gradient, we can get we can see head rice percent was 85.63, and also broken rice reduced 14.37%. So conclusion, by the increasing of the voltage gradient also increase the temperature, and also we can reduce the process timing. So we can save our product by the insect and molds, and also head rice recovery was the parboiled paddy was found higher than 24% compared to the raw paddy. And acknowledge I have done all these things at the JNKV Vidyalpur under the guidance of the Mohan Singh sir and Dr. S.K. Garg sir, and also with Dr. Khan sir. Thank you. Okay, thank you, Aradhana, and thank you also for keeping the time. Now next, Thank you, sir. next speaker is Dr. S.K. Goyal on artificial intelligence and internet. Good afternoon to all, respected chair, co-chair, convener, rapporteur, and dear delegates. So, sir, I have, I think, 5 minutes only. Yeah, thank you. So today I am going to discuss about AI and IoT, that is making agriculture smart. I will be discussing in this talk about AI and IoT, applications of both of these in agriculture, and what will be the take-home message. As today, as we all are thinking, working, and living in a smart world, like smart city, smart hospital, smart highway, smart factory, smart classroom, smart dresses. So why we are not, we can do the smart agriculture. So I choose this topic for this cause only. I am not going to discuss what is AI. Just I want to tell you what is the artificial about intelligence in AI. Actually, AI is the analytical process one can associate with human thinking, like speech recognition, natural language understanding, translation, knowledge management, image analysis, decision making, and many more things. In simple words, we can say AI is a smart monitor system to find solution very quickly. So if we are using this AI in our agriculture, then what we can do with this? We can do automated farming activities, identification of pest and disease, outbreak before occurrence, managing crop quality, monitoring biotic, abiotic factors and statistics. Then machine vision system and phenotype lead to the adjustment. As our chairperson, who is not present here, and our DDG sir, and even Dr. Mehta sir also discuss about this
AI and IoT. So how we can apply this AI in our Indian agriculture? In foreign countries, they are using this AI in trial basis, like automated irrigation system, driverless tractors are also using in agriculture. Then gigas, this is a intelligent system using in our greenhouse or crop protected cultivation system. Then drones are also using in our Indian agriculture also. I am also using these drones for spraying the nutrients, micronutrients, pesticide, even herbicides. We are applying with this drone technology. And we can also use, if we are using this AI, like remote sensing based crop health monitoring, information center for dairy cattle in our dairy farms, face recognition system for domestic cattle. If we have a big dairy farm and we can manage our cattle with this technology, then Blue River technology, this is a technology which is using for this agriculture robotics systems. Okay, and we can also use this AI in decision support system in our greenhouse for tomato and any other crop production. Then climate control in our this greenhouse. Then gas fermentation system in the stomach of our cattle. And if we are using this AI, we can also develop such type of machines that can harvest our crops very simple manner. We are talking about precision farming. In this precision farming, we have to apply our agriculture inputs at the right time, right manner, right amount, right way, and right place. So all these right can be applicable with this AI. If we can use this AI, then we can apply this right at the right place. Okay, and the current example in our Indian agriculture, ICAR-NAHEP is using this AI-based yield management system for the crop production, and simple data is available. The farmers, those are using this AI-based application, they have earned 30% more yield. If we are using this AI in our greenhouse technology, then this is a simple sketch diagram you can see, by which applying the AI we can grow our production and with minimum utilization of agricultural inputs. Then next thing is IoT, Internet of Things. So this is also known as Internet of Everything. Actually, there is a British technologist who has developed this, and the IoT day is celebrated on 9th April, and this day is his birthday. Benefit of adopting IoT and AI technology in agriculture. As we can see through this slide, if we using this IoT and AI, then our agriculture may be smart with the decision making through data analysis, then automated agriculture machines for improving crop quality, limiting uses of pesticide and healthier soil quality, then reduction of risk in salts and business process. And if we are using this IoT and AI, then deployment of predictive system for create algae farming workflows and increase efficiency on the land, then minimize labor cost due to smart technologies. So there are a number of machines are available like robotics, as our chairperson also discussed about robotic technology. At the end, you can say conclusion, I am saying this take-home message. Our traditional knowledge and skill of farmers cannot be replaced by any technology, but implementing AI and IoT reduces the chances of error. Those are generally happen in our fields. Those with little understanding of farming can easily use these data-driven autonomous system. So thank you. If you have any query. Okay, Dr. Saab, thank you. Let us come to the next. Okay, welcome, sir. Next presentation is by Sandeep Kumar.
Rumandla Sandeep Kumar, studies on physical properties of rice varieties. Sandeep, try to finish within 5 minutes. Okay. Physical properties of rice. They are useful to distinguish the rice varieties and grades. The market quality of rice depends on the physical properties. So, to design an equipment like harvesting, plantation, transportation and storage, especially processing equipment, the knowledge of physical properties of rice is important. These are the list of the physical properties. Moisture content, grain size, length, breadth, thickness comes under the length, grain size. Grain shape depends on LB ratio, 1000 grain weight, density, porosity, bulk density, sphericity, husk content, head rice recovery and milling yield, broken percent, degree of polish or milling qualities of rice. And for international trade, the physical properties of rice are used. Grain size, it is defined by depend on length of the grain. It is classified as extra long, long, medium, short. The shape of the grain depends on LB ratio. These terms we hear long slender, medium slender and short slender. The weight of the grain defined, it is known as test weight. If the 100 grains of the rice is taken for measuring the test weight. So these are the objectives. Objectives are three varieties of grains are selected. Three varieties of paddy was chosen to distinguish their physical properties, to distinguish them by measuring the physical properties and study the effect of degree of polishing on milling yield. So three varieties of rice are procured, paddy was procured. They are JR206, MTU 1010 and JR81. They are designated as V1, V2 and V3 hereafter. So moisture content, linear dimensions, length, breadth and thickness were measured by digital vernier calipers. Moisture content was determined by standard gravitic hot air oven method. LB ratio, sphericity was determined by using this formula. The product of length, breadth and thickness cube root divided by length. The mass of 1000 grains was also measured. Bulk density, true density is determined by toluene displacement method. In a volumetric flask, 20 ml of toluene is taken and the known mass of grains were filled into the volumetric flask and the volume of the displaced toluene was measured to measure the void, the volume of voids. The porosity determined by using this formula, true density minus bulk density by true density into 100. Husk content, 1000 grains of paddy was separated using hand pounding method. The paddy is dehusked. The husk content, weight of the husk by paddy, the weight of the paddy into 100. The milling characters, milling yield depends on the mainly degree of polish, broken percentage and husk percentage. The grains, the three varieties are shelled using laboratory sheller and degree of polishing polishing is done by laboratory polisher. The brokens were separated and head rice also calculated using this as a percentage of paddy. So here are the physical properties which distinguishes these three grains. So 7.1 length length 6.9 and 6.74. 7.1 is greater than 7, so JR81 is designated as extra long, and whereas the other two MTU 1010 and JR206 they are designated as long varieties, and the breadth
2.35, 2.22 and 2.21. So here the important point I am going to drive, which is length by breadth ratio 2.86, 3.2 and 3.4. So this conclusion, sir, I am telling. So here it is V1 variety is less than 3, so it is called as medium slender, whereas the other two is called long slender. Sphericity means which is closer to the sphere, shape of sphere. The test weight to 21, 22 and 21, they are more than 20, then they are called heavy varieties. So these are the bulk density and true density values. Porosity, husk content 18.25, 19.27 and 19.14. So these are the degree of polish. Degree of polish is more for MTU 1010 at 90 seconds of duration of polish in laboratory sheller polisher. So it is less for degree of polish is lesser for JR206. Headrest recovery is more for JR281 and lesser for JR206. Broken percentage is less for JR81 and higher for 35.35 for JR206. So these are the physical properties which distinguish these three paddy varieties. So that's all. Thank you, sir. Thank you, everyone. With that, we finish all the presentation in this third technical session of the seminar. In this session, in all 8 papers were due for presentation. One was absent, one was added. So in all, there were only 8 papers. So I again thank all those who participated in this presentation program. And now, from side of host, I request you all to come to lunch in Indian Coffee House. Okay, thank you. Okay, before we leave for lunch, जो हमारे को चेयरमैन डॉक्टर मोहन सिंह साहब रहे हैं, इनको इस सेशन को चेयर करने के लिए ये पूरे प्रोग्राम के लिए एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं. हटा दूं ये वाला पेन ड्राइव? हाँ हटा दो, हटा दो. ये रिकमेंडेशन की फोल्डर एक बनानी पड़ेगी, की डाल दिए आप देखिए. सेशन 4 कर देना इसको, है ना? रिकमेंडेशन बस ठीक अंदर डाल. आपको पेन ड्राइव एक सेकंड लगा, पेन ड्राइव आ गई ना? नहीं आई क्या? पहले मैं माइक बंद करता हूँ.
एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के 2 दिन के कन्वेंशन की जब इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में भूमिका बनी तो हमको सर्वप्रथम हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर मिस्टर पवार साहब ये खड़े हैं, इनने कहा कि साहब बहुत सरल है, अगर हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज चलते हैं, हमारे मित्र डॉक्टर आर.के. नेमा हैं और आर.के. नेमा साहब के साथ हम बात कर सकते हैं। तो हम लोग इनके घर गए, तो दुबे साहब हमारे और ये घर गए और उसको इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स लेके आए नेमा साहब को, और उसके बाद शुरू हुआ। कल साहब विनय पांडे साहब बैठे हैं, ये कल डॉक्टर विनय पांडे तो यहीं के हैं सर, वो भी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के हैं, पर अतुल श्रीवास्तव साहब से एक बार मुलाकात करना पड़ेगी। तो अतुल श्रीवास्तव साहब से मिले, के अग्रवाल साहब से मिले। के अग्रवाल साहब हमारे बीच में बैठे हैं, भारत कृषक समाज संघ के अध्यक्ष हैं ये, और किसानों के आंसू पहुंचते हैं, प्रैक्टिकली किसानों के आंसू पहुंचते हैं। अरजरिया साहब उनके साथ डॉक्टर अरजरिया बैठे हैं, ये एक यंगर ग्रुप के किसानों के आंसू पहुंचने वाले हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, ये अपनी विरासत इन्हीं को देके जाएंगे। तो इस तरह से सर अतुल श्रीवास्तव साहब हमारे बीच में है, तालियों से इनका भी स्वागत करें। बहुत मदद की है साहब, बहुत मदद की है, और अपने घर के जैसा घर की शादी होती है उस तरह से अतुल श्रीवास्तव साहब ने मदद की है। धीरेन्द्र खरे साहब का स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक शुक्ला साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पर, हमें कंडक्शन का प्रभार तो नहीं है, पर मेरे को इसकी हिस्ट्री बताने का मैं उसके लिए थोड़ा सा ललायत था कि साहब हिस्ट्री जरूर बताई जाए, जबकि हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट शिवानंद राय साहब आए हैं और मेरे टेन्योर में, मेरे ऑनरी सेक्रेटरी के टेन्योर में आए हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, कि वो अपनी उनने इंजीनियरिंग कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसको फाइनलाइज किया बैठ के, कल आ गए थे शाम को, और इतने सरल हृदय हैं कि उनको बिल्कुल कोई शिकायत नहीं रहती सर, हमेशा सुझाव रहता है और शिकायत बिल्कुल भी नहीं रहती। तो इस बीच में हमारे जेपी पाराशर साहब बहुत सरल हृदय हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इस कन्वेंशन के थे, हमेशा हमारे साथ चले। तो पवार साहब और नेमा साहब का बता चुका मैं, अतुल श्रीवास्तव साहब का बता चुका आपको, हमारे जेपी पाराशर साहब हो गए, और हमारे स्टाफ में जो पीछे बैठे हुए हैं मिस्टर त्रिवेदी और अमित दवे, दिन रात इनका सहयोग रहा है। मिस्टर वाजपेयी को भूल नहीं सकता, ये मनीष वाजपेयी पीछे अपना मोबाइल लगा रहे हैं, इनका भी पूरा सहयोग रहा, और मिस्टर राजपूत। तो जो हमारी टीम है सर, ये टीम है, क्योंकि ये काम तो सबको दिखता है सर, और असाइनमेंट सभी दे देते हैं, पर एक्चुअल में काम करने वाले लोग कौन हैं, इनका नाम कभी नहीं ले पाते सर। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के 2 साल के टेन्योर में मैंने यही किया है कि जो पर्दे के पीछे जो लोग हैं उनको हम सामने लेके आए हैं, और हमने रियल, और बात यह है सर कि हम इसको सिर्फ मौखरी, इस तरह के कन्वेंशन को मौखरी नहीं होने देना चाहते। अतुल श्रीवास्तव साहब और पूरे सर, जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, अवस्थी साहब हैं, वाजपेयी साहब हैं, नेमा साहब हैं, ये पूरे स्टाफ का सर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टाफ का सभी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, और सभी स्टूडेंट्स का मैं सर ऋणी हूँ। इनने सर दिन रात मेहनत करके सर इस तरह का ये इतना सफल आयोजन बनाया है सर, इनॉग्रल फंक्शन इतना ब्यूटीफुल हुआ है, हमारी मेमोरी में आखिरी तक रहेगा सर ये। बस सर मैं सभी का अभिनंदन करते हुए मंच सर नेमा साहब को सौंपता हूँ। धन्यवाद। A very warm good afternoon to all of you. बड़ी खुशी का विषय है कि आज हमारे बीच में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट इंजीनियर शिवानंद जी राय हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ये संयोग ही कहें, हम तो इसे संयोग कहते हैं। अभी लोग ये संयोग कह रहे थे कि चूंकि इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस जबलपुर में हो रही है और उसके पूर्व निरीक्षण या पूर्व तैयारी के रूप में राय साहब यहाँ आए थे।
हम कहते हैं सर ये हमारा संयोग है, आज आपको हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होना था, इसलिए इंडियन कांग्रेस इंजीनियरिंग कांग्रेस है जबलपुर में रखी गई और आज आप यहाँ उपस्थित हैं। ये बड़े संयोग का विषय है। मैं चाहूँगा सर आप मंचासीन हों और डॉक्टर मेहता से अनुरोध है कि उन्हें बुलाएं। मैं आज के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर धीरेन्द्र खरे साहब, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि मंचासीन हों। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और चेयरमैन श्री पीसी दुबे जी, इंजीनियर पीसी दुबे, उनसे भी निवेदन है कि मंचासीन हो। और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इंजीनियर पारस सर जी, जबलपुर लोकल सेंटर के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इंजीनियर संजय कुमार मेहता जी, हमारे डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर पांडे साहब दिख नहीं रहे, ही इज कमिंग, और डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और कार्यक्रम के कन्वीनर अतुल श्रीवास्तव जी। और सौभाग्य का विषय एक और भी है कि कल किसी कारणवश हमारे डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन जो पूरी पीजी स्टडीज के नियंता और निर्धारक होते हैं, कल किसी कारणवश वो बाहर थे और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे मंचासीन हों। ये हमारा सौभाग्य कि आज हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक ठीक हाँ। आज हमारे मंच को पूर्णता प्राप्त हुई। कन्वीनर, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, हमारे डीआई, हमारे डीन फैकल्टी और इस पूरे आयोजन के जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इन्वॉल्व है, इसमें उनके अध्यक्ष शिवानंद जी हमारे बीच में हैं। मैं एक बार पुनः सभी से स्वागत करने के लिए अपील करूंगा ताली बजा करके। और डॉक्टर राजेश गुप्ता, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, को-ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे, जो इस कॉलेज से पूरी बागडोर संभाले हुए थे, उनसे भी अनुरोध है कि वे मंचासीन हो। कहीं कार्यक्रम में व्यस्त हैं। हाँ, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारे हेड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग डॉक्टर मोहन सिंह से, वे आएं और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर मोहन सिंह प्लीज। सर्वप्रथम हम आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स शिवानंद जी जो हमारे बीच में पधारे हैं, बड़ी कृपा करके उनसे उनके सम्मान हेतु मैं निवेदन कर रहा हूं। हमारे विभागाध्यक्ष फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डॉक्टर मोहन सिंह स्वागत कर रहे हैं। चंदन, पुष्प बंदन और साल से अनुरोध है डॉक्टर मोहन सिंह से पुनः कि हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र खरे साहब, जो लगातार हमें पूरे वीक में अपनी मॉनिटरिंग और अपने सजेशंस के द्वारा हमें लगातार प्रोत्साहित और मार्गदर्शन दे रहे हैं। अरे एक
आपको बताते हुए हर्ष है कि हमारे जो आज प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स आए हैं, वे पेशे से सिविल इंजीनियर और इंजीनियर इन चीफ झारखंड स्टेट से सेवानिवृत्त हैं और लगातार अपनी सेवाएं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स को दे रहे हैं। उनकी अवस्था और उनकी लगन दोनों कहीं कॉन्ट्रडिक्शन पे हैं। अवस्था जैसे जैसे बढ़ रही है, लगन और समर्पण उतना ही उनका प्रबल है और इसका उदाहरण हम देख रहे हैं कि आज वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। एक छोटे से निवेदन पर, चूंकि वो जबलपुर में थे और हमने निवेदन किया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के माध्यम से, उनके अध्यक्ष और सचिव के माध्यम से, तो ये किसी भी नेशनल आयोजन का एक सौभाग्य है कि उनके अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हों। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम जब भी कोई कार्यक्रम करेंगे, हमें अप्रोच करेंगे तो हमें आपका समय प्राप्त होगा। राजेश गुप्ता जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। हाँ, मैं निवेदन करूंगा हमारे एक मिनट अवधेश नेमा जी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो इसी कॉलेज के एलुमनाई हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से और हमारे आयोजनकर्ताओं की तरफ से डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन आदरणीय अभिषेक शुक्ल जी को सॉल, श्रीफल और तिलक बंधन करके उनका सम्मान करें। आपका भी मार्गदर्शन हमें लगातार प्राप्त होता रहता है इस NAHEP के प्रोजेक्ट को और उसकी गतिविधियों को लगातार गति देने में आप संलग्न रहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आज आपने हमें बीच में समय निकाला है। मैं पुनः आवाज दे रहा हूं डॉक्टर षडानंद पटेल साहब को कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करें। डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी का स्वागत करेंगे पटेल साहब। और ये यही तो बात है। मैं डॉक्टर विनय पांडे साहब को आमंत्रित करता हूं, जो मेंबर काउंसिल भी हैं इंस्टीट्यूट में और हमारे डीन हैं IGKU में और सबसे ऊपर है हमारे एलुमनाई हैं, हमारे बीच के हैं। वे स्वागत करेंगे डीन फैकल्टी हॉर्टिकल्चर डॉक्टर SK पांडे सर का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर एब्रोल साहब से कि वे आएं और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के हमारे जो पदाधिकारी हैं, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी श्री इंजीनियर PC दुबे साहब का स्वागत करेंगे। प्रोफेसर एब्रोल साहब, उनसे अनुरोध है। एक और अंजलि, PC दुबे लगातार इस कार्यक्रम को गति देने में पिछले 3 माह से गतिमान हैं। उनका भी आप जॉइंट जबलपुर डेवलपमेंट कारपोरेशन के से सेवानिवृत्त और पूरे भारत में इवेल्युएशन के लिए आप चार्टर्ड हैं, ऐसी हमें जानकारी आपने दी। बहुत अच्छा आयोजन आपने करवाया है। श्री पारस सर जी, हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से, ये भी बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे ही एलुमनाई हैं आप, सेकेंड बैच एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में अत्यंत सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं चाहूंगा हमारे मेहता साहब, जो पहले दिन से कंधे से कंधा मिलाकर दुबे साहब के साथ में इस आयोजन के लिए काम कर रहे हैं और आप पावर ट्रांसमिशन कंपनी में इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम के साथ में आप जबलपुर लोकल चैप्टर के
सेक्रेटरी, ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं, लगातार अपनी संलग्नता बनाए हुए। हाँ, ऐसा हमारे डीन साहब कह रहे हैं कि ऐसा लगता है हमारे ही फैकल्टी मेंबर हों वो। और ये मैं अपने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के और अत्यंत सक्रिय, मैं कल जिनका नाम बिसर गया था, आज वो सामने बैठे हैं, आदरणीय एस पवार साहब, इंजीनियर पवार साहब हमारे आज से 25 साल पहले जब ये कमांड एरिया डेवलपमेंट में काम करते थे, जब ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में खुलरी माइनर और हम लोग जाते थे, वहाँ से हम लोग संबंध हैं। आज वे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि वे श्री राजेश गुप्ता जी इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी का स्वागत करें। स्वागत का क्रम ये आगे तक चल सकता है, परंतु मैं केवल 2 व्यक्तियों का और थोड़ा नाम लेना चाहूंगा। हमारे बीच में के अग्रवाल जी, हमारे जो भारत कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, और हमको बहुत दबाव था उनका कि इस कार्यक्रम में कम से कम 200-300 किसान भी आना चाहिए, परंतु हमने कहा कि मर्यादाओं का रक्षण करना भी हमारे काम है। इस कॉलेज की जो बिठाने की संख्या है वो 200-300 से ज्यादा नहीं है। कभी हम ऐसा कार्यक्रम करेंगे जब मुख्य कार्यक्रम ऑडिटोरियम में होगा तो 500 किसानों के साथ उसको करेंगे। अग्रवाल जी का स्वागत किया जाए। आदरणीय तिवारी जी से, वी.के. तिवारी साहब पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करें। और एक शख्स और हमारे साथ बैठे हुए हैं जो जिनकी वकालत भी किसानों की है, जो हमारे बोर्ड मेंबर के सदस्य रहे हैं, अर्जरिया जी। मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत मनीष पटेल जी आ गए क्या? मनीष पटेल अत्यंत सक्रिय और कहें कि बैकबोन ऑफ दिस होल प्रोग्राम, ये शुड बी। अर्जरिया जी का स्वागत करें। विकेट कीपर एंड बैट्समैन, ऑलराउंडर। तो मैं स्वागत के क्रम को यही विराम देता हूं, और ये मानिए कि जिनके नाम रह गए हैं वे हृदय में हैं, और मैं लगातार उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप नहीं सर, बॉस इज ऑलवेज राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। लगता तो ऐसा है कि चूंकि हम अपने घर में बैठे हैं, हमारे ही डीन फैकल्टीज, 3 डीन फैकल्टीज बैठे हुए हैं, हमारे ही डीआई बैठे हुए हैं, तो हम सबका स्वागत ही करते रहे आज, क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसका दिल में उत्साह, उमंग और धन्यवाद का जो अंदर दौर चल रहा है वो इतने से शांत नहीं होता। परंतु इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे इस कार्यक्रम के को-ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश गुप्ता जी से कि वे ब्रीफ रिपोर्ट हमारे बीच में प्रस्तुत करें। आपके क्रम आइए तो वही माइक दे दें। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि आज हमारी एक स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। हमारे दिसंबर में एक फंक्शन होने जा रहा है बहुत बड़ा, उसमें शायद वो भी आए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए। उसमें हमारे जो एग्रीकल्चर बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, क्या है, नेमी चंद्रप्पा, वो साहब खड़े हो गए। हमारे चेयरमैन साहब गवाह है, मैं यदि झूठ बोल रहा हूँ तो। वो खड़े होके उन्होंने इतनी तारीफ की इस प्रोग्राम की, और विशेषकर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और हमारे मेहता जी की बहुत तारीफ। आपका नाम भी लिया था उन्होंने, क्या साहब इतना शानदार प्रोग्राम हुआ है। और सब लोगों ने
मेरे ख्याल से 3 मिनट तक ताली बजाते रहे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ का वो डिवीजन का अध्यक्ष आए और वहाँ पे वो इस बात की सूचना दे और हमारे स्ट्रीट निकलने, इधर से नहीं आए हैं, दिल्ली से आए हैं, झारखंड से आए हैं, बाहर से आए हुए हैं सब लोग, उनके सामने उन्होंने बहुत तारीफ की इस प्रोग्राम की। थैंक यू सर, हम लोग हैं तारीफ काबिल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश गुप्ता जी अपने वक्तव्य के लिए। धन्यवाद डॉक्टर नेमा सर। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सम्मानीय मंच की इजाज़त से और समस्त प्रतिभागियों को मैं एक बार पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि मुझे कहा गया है ब्रीफ रिपोर्ट के लिए, और पिछले कल से इतनी सारी गतिविधियाँ हुई हैं कि उसको संक्षिप्त में बोलना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि इतनी अच्छी इवेंट्स हुई, पैरेलल हुई कि हमें बहुत समय कम पड़ गया। अगर हमारे पास समय और होता तो शायद और भी हम अच्छी एक्टिविटी कर पाते। जैसे हमारे जो कार्यक्रम की शुरुआत है, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो हमारा ये कार्यक्रम हुआ है, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लोकल चैप्टर और नाहेप कृषि मंत्री महाविद्यालय JNKV जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में इसका जो शुभारंभ है वो हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर PK मिश्रा सर ने द्वारा किया गया। और सर के द्वारा एक बात बहुत अच्छी बोली गई कि यदि हम सभी कृषि इंजीनियर अगर हम एक सही डायरेक्शन में और किसानों के साथ मिलकर कार्य करें तो हम किसी भी चुनौती को पा सकते हैं। और इसी अवसर पर कार्यक्रम के जो हमारे शुभारंभ कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे डॉक्टर SN झा साहब, DDG एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ICAR नई दिल्ली, तो सर के द्वारा एक बात कही गई कि जैसा कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि सबका विकास सबका प्रयास, तो उन्होंने एक बात ये कही कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बहुत सारी विधाएं सम्मिलित हैं। हम सिविल की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, तो सर ने ये बोला कि अगर हम सब मिल के प्रयास करें तो जो भविष्य में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं उसको एग्रीकल्चर इंजीनियर बहुत आराम से उसको सुलझा सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी कि जो आगे जाकर हमेशा हर जगह, और उन्होंने यह भी कहा कि हर फील्ड में एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हमारे अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसी अवसर पर CII भोपाल से डॉक्टर CR मेहता जो कि वहाँ के निदेशक भी हैं, सर के द्वारा डॉक्टर रविंद्रनाथ मेमोरियल लेक्चर का भी यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसके अंदर सर ने जो कृषि में नवाचार हैं और जो भविष्य में है, सर ने यह भी बोला कि 2045 तक हम कहाँ देखना चाहते हैं अपने एग्रीकल्चर इंजीनियर फील्ड को। तो सर के द्वारा बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया गया और जिसमें लोगों ने सवाल भी पूछे और सर ने उसका संतुष्टिकरण जवाब भी दिया। और सर ने यह भी कहा कि पूरा जो फील्ड है ICR से लेके यहाँ तक, और यह भी बात हुई कि प्रत्येक जो जिला है उसमें कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग की तरफ से कम एक एग्रीकल्चर इंजीनियर जरूर होना चाहिए और इसके लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से इंजीनियर राजीव चौधरी जी जो वहीं के डायरेक्टर हैं, सर के द्वारा भी यह बताया गया कि उनके विभाग के द्वारा जितनी नई तकनीकें हैं जो ICR से SAU से जो मिल रही हैं, तो पिछले 10 से 15 सालों में उन्होंने पूरा डायरेक्टर को जो डायरेक्टरेट है उसको एस्टेब्लिश किया, जो कि बंद होने वाला था। और आज ये स्थिति है कि उसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और उस वजह से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का गांव-गांव में भी पहचान हुई है कि हाँ, एग्रीकल्चर इंजीनियर जो है वो क्या महत्व रखते हैं। और हमारे साथ में डॉक्टर नेमी चंद्रप्पा, चेयरमैन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिवीज़न IEI भी उन्होंने भी अपना उद्बोधन दिया। और सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि शायद IEI के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंस्टीट्यूशनल जो है अलग अलग करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहली बार इस तरीके का कन्वेंशन उन्होंने किया। और उन्होंने ये बात कही कल कि इसका भव्य शुरुआत देख के, और अब तो हम ये कहेंगे कि अच्छा भव्य समापन भी हो रहा है हमारा, बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट्स आए। तो उन्होंने ये बोला है कि आगामी जो उनकी काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें वह प्रस्ताव पारित करने वाले हैं कि आगे से जो भी इस टाइप की कन्वेंशंस हों वो किसी ना किसी नज़दीकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हों। तो ये हम सब रिसर्चर्स के लिए अच्छी बात है कि हम हमेशा अच्छे लोगों से जुड़े रहेंगे। और जो शुभारंभ कार्यक्रम के अंत में III की तरफ से 5 यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी दिए गए और जो हमारे सम्मानीय अतिथि थे जो अलग अलग फील्ड के अपने विख्यात
और बहुत अच्छे कार्य करने वाले हैं, तो सभी को 5 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया गया। और अगर हम तकनीकी सत्र की बात करें तो हमारे इस 2 दिन में कुल 4 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए और चारों सत्र में ओरल और पोस्टर दोनों के माध्यम से जो हमारे अलग अलग क्षेत्र से जितने प्रतिभागी हमारे आए हुए हैं सभी ने अपने बहुत अच्छे प्रस्तुतिकरण दिए, चाहे वो पोस्टर के माध्यम से हो या ओरल के माध्यम से हो। हालांकि जो हमारा शेड्यूल था 6 बजे तक का, लेकिन सारे हमारे कल के शेड्यूल लगभग 6 बजे के बाद तक चले और सभी का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। और कुल मिलाकर हमारे 4 थीम पर प्रेजेंटेशंस हुए। पहला था एग्रीकल्चर ऑटोमेशन एंड फार्म मैकेनाइजेशन, अगला था नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा था फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और जो चौथी थीम थी हमारी वो थी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड मैकेनाइजेशन फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। और एक बहुत अच्छी बात ये रही कि हम लोग ने शुरू से कोशिश की थी कि हमारे हर थीम पर जो इंडिया में अच्छे रिनोवेट्स हैं और अच्छे जो उसमें लीड करते हैं ऐसे विख्यात लोगों को यहाँ बुलाया जाए। तो इसमें कुल 7 लीड लेक्चर्स भी हुए अलग अलग सत्रों में और उसके माध्यम से भी बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हुई। और कुल जो हमें ओरल और पोस्टर प्रेजेंटेशन मिला के लगभग 150 शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया गया। और इसके बाद में जो हमारी इवैल्यूएशन कमेटी थी उसके द्वारा सारे ओरल और पोस्टर प्रेजेंटेशनों का इवैल्यूएशन भी कर लिया गया है और कुछ ही क्षणों के पश्चात प्रत्येक सत्र में 3 ओरल बेस्ट प्रेजेंटेशन और 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही पोस्टर में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अवार्ड्स आपको अभी प्रस्तुत किए जाएंगे, प्रतिभागियों को दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल 24 जो हैं वो अवार्ड इसमें दिए जाएंगे। और अगर मैं सहभागिता की बात करूं तो लगभग 192 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और कुछ लोग किसी वजह से डेट निकलने की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स, कुछ फैकल्टी यहाँ पर शामिल हुए और पूरे इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 250 लोगों ने अपनी प्रतिभागिता की और प्रोग्राम को सफल बनाने में मदद की। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, आपने पूरी विहंगम दृष्टि पूरे कार्यक्रम की प्रस्तुत करी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर इंजीनियर चेतन को कि वे आएँ और अपने पहले सेशन का टेक्निकल सेशन 1 एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन एंड फार्म मैकेनाइजेशन के टेक्निकल रिपोर्ट और रिकमेंडेशन प्रस्तुत करें। डॉक्टर इंजीनियर चेतन CR। हाँ सर, इसमें थैंक यू सर। कौन से इसमें रखा था सर? मनीष, कौन सा इसमें? इसमें इसी में था। Respected dignitaries in the dais and after dais, my friends, good afternoon to one and all. I'm going to be present the reporting report of the technical section 1, which is on the sub-theme of agricultural automation and farm mechanization. It was chaired by Dr. K.N. Agarwal sir. He is the project coordinator of AACRP and FIMCA Bhopal, and co-chaired by Dr. A.K. Srivastava sir. He is the Dean Faculty Agriculture Engineering. The technical section 1 was held on 12th September 2023 for oral presentation on the theme of agriculture automation and mechanization. As I said, it was chaired by Agarwal sir and co-chaired by the Srivastava sir, and the reporters were myself, Dr. Chetan here, and Dr. Vikram Jyoti. Then in this technical session, there were 2 lead lectures. First lead lecture was ergonomical consideration in design of equipment, workplaces and their safety aspect. It was presented by Dr. N.K.N. Agrawal sir. And the second was race mechanization, status and way forward, which was presented by Dr. A.K. Srivastava sir. In first, the recommendations of the first lead lecture, that is the different ergonomical and strength parameters were briefed during the session, and different parameters needs to be considered to design the machine suitable for both male and female gender were explained. Some of the points on occupational health hazards. Sorry. Okay, okay, sir.
Some of the points on occupational health hazards were highlighted, and some example like ergonomical design improvisation in cashew processing industry, fish industry, coconut coir industry, etc. were also given. It was suggested to design the machine according to the ergonomical design consideration. And the recommendation for the second lead lecture, that is, it was given the status and farm mechanization in different crops were given, different farm operations followed in rice cultivation was highlighted. And two machines which were developed in JNKV Jabalpur, that is the precision seal header as well as the battery operated paddy seeder. It was also highlighted and also suggested to adopt at larger scale at the farmers field. Then total 10 oral presentations were allotted for the session, out of which 8 oral presentations were presented. First one is that the paper on the manually operated mulch laying machine with punching unit was presented. The committee felt that such type of mulch laying machines are advantageous to the farmers and small and land holding farmers. Then paper on development of finger millet thresher and its performance evaluation was presented. Committee concluded that the machine performs better and is economically feasible as compared to the traditional method. Then paper on CIE economy seeder, a 3-in-1 stubble management solution for combined harvested paddy field was presented. Committee concluded that this seeder is an innovative in situ crop residue management technology that accomplishes the 3 tasks simultaneously. So recommended this machine for seeding in crop residue condition. Then paper on interventions to reduce vibration transmission to the operator from self-propelled onion weeder. Committee recommended the intervention suggested to reduce vibration in self-propelled onion weeder or such machines. Then paper on fixed spray system for efficient agrochemical applications in high density Appalachia was presented. Committee recommended the use of a fixed spray pattern which can efficiently apply agrochemical in high density orchards and can save cost, have better penetration of chemicals and ensure the environmental safety. Then paper on development of low cost battery operated electrical vehicle sprayer with a boom sprayer attachment was presented. Committee felt that it is an important step towards reducing dependency on fossil fuels, thus recommended for spraying operation. Paper on novel potato planter for planting the cut potato seed tuber and spraying of pre-emergence herbicide was presented. Committee concluded that the developed planter is very useful in planting cut seed tuber and controlling the weeds effectively, that is recommended for larger adoption at farmers fields. Paper on CIRCOT or ABI Mumbai incubation support to startup in agri and allied sector. Committee felt that such type of incubation centers are important to support the startup in agriculture sector and to provide ecosystem for agri entrepreneurs. Also, such startups should be periodically as well as precisely monitored for their sustainability. This is the report for the oral presentation. Then this is the report for the poster presentation. There were 40 papers were allotted for this session, out of which 17 were presented. It was chaired by Dr. K. Agrawal sir and co-chaired by Dr. Atul Srivastava sir. First paper was the paper on availability of seeders in India was presented. Committee felt that it was important to have knowledge and availability on seeders. Paper on performance evaluation of pod stripper for groundnut was presented. Committee recommended to use at farmer fields. Paper on machine for crop residue management in rice wheat green gram cropping system was presented. Committee felt that it was a good information and recommended it to adopt. Paper on log making machine for production of different cattle dung logs were presented. Committee recommended to adopt by dairy farmers. Then paper on development of sensor based sprayer for vegetable crops was presented. Committee recommended for further studies and adoption at farmers fields. Paper on a review on rice residue management was presented. Committee felt that it was useful information. Paper on effect on material hardness and other parameters of material used for farm implements was presented. Committee felt that it was a useful information for researchers and machinery manufacturers. Paper on performance of handled linseed thresher was presented. Committee felt that it was a good machine and recommended it for adoption. Paper on animal drawn solar powered sprayer was presented. Committee felt that it was a good machine and recommended further upgradation. Paper on properties of soybean chickpea seeds for designing the seed planter was presented. Committee felt that it was a good information and recommended for adoption. Paper on unmanned agricultural vehicle for precision agriculture was presented. Committee felt that it was an innovative mission and recommended for adoption. Paper on role of 3D printing technology in food industry was presented. Committee felt that it was a good information and recommended for adoption by the food industry. Paper on power operated groundnut decorticator cum grater was presented. Committee felt that it was a good machine and recommended it for adoption. Paper on advancement in grape production system was presented. Committee felt that it was a good information and recommended for large scale adoption. Paper on performance evaluation of maize crop harvester was presented. Committee felt that it was a good information and recommended for further improvisation of the machine. Paper on occupational challenges of greenhouse workers in horticulture production was presented. Committee felt that it was a need of the hour and recommended for economical safety features.
This is the report of the technical session 1, and thank you all. Of course, this was the biggest session in terms of poster presentation or oral presentation or the participation in all the three cases. So, I appreciate the slow speed of Engineer Chetan. I would like to request DICE to kindly award the winners in the oral presentation. The third award for oral presentation goes to R.K. Naik and others on studies on performance parameters of development of finger millet thresher. The second position is shared with Chetan CR and D.S. Karale. Both are equivalent, so both are awarded second presentation in the oral presentation. Chetan CR, novel potato planter for planting cut potato seed tuber and spraying of pre-emergence herbicide. And it is shared by T.S. Karale, development and performance evaluation of battery electric vehicle operated sprayer. In oral presentation, the first position goes to Ramesh K. Sani, fixed spray system for efficient agrochemical application in high density apple orchard. In case of poster presentation, the third position is shared with the two persons, Saurabh Kumar Devangan and Ankita Shinde and others. Saurabh, please come. Comparative performance of machines for crop residue management in rice wheat cropping system. And Ankita Shinde and others, physical properties of soybean and chickpea seeds for designing an efficient seed planter. Oh, I'm sorry. Third is shared by three persons. Three persons are equivalent, and the third one is Shalini Garudik. Shalini Garudik, performance evaluation of maize cab harvester in Chhattisgarh. Again, second shared by two persons. One is A.K. Srivastav, occupational challenges of greenhouse workers in horticulture production. And the tie is at the host place, I think, Ashish and C.S. Sahai. No, C.S. Sahai is from MPKB. At advancement in grape production system, machinery tools for improved efficiency. Isme, I think Keshav is present. Dr. A. Keshav Kumar. You can see the competence and competition in these papers in poster presentation. And the first position goes to Rahul Gautam and others on rice residues management after harvesting, a review of mechanization status. Rahul.
हमारे मंचासीन अतिथियों को धन्यवाद। और मैं अब सेकंड सेशन की प्रोसीडिंग के लिए, सेकंड सेशन वाज ऑन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। डॉक्टर सौरभ नेमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जोधपुर, he will present the proceedings of natural resource management session. Please be brief and slow. Good afternoon to all the dignitaries on the desk and off the desk. I'm going to present the recommendations of technical session of 2, which is held on 12th September between 3 to 6 p.m. The chairman of that session is Dr. Vinay Kumar Pandey sir. He is the Dean Faculty Agriculture Engineering IGKV Raipur. And it was co-chaired by Dr. M.M. Deshmukh, Professor and Head, Irrigation Drainage Engineering, PDKV Akola. So there were 2 lead lectures that were delivered by, first one was Dr. Vinay Pandey sir. He was presented the overall picture of agriculture engineering, education, research and extension in the Chhattisgarh state. It was really a good presentation and it was very helpful for planning the academic structures. The second lead lecture was presented by Dr. A.K. Nema. He has presented a valuable simplified hydrological model for estimating area, cross sections, flow volumes, runoff rate, waste weir disposal systems, and methodologies for selection of water harvesting structures. They are very explained in a very simple manner. You can say that the village poetic language or lukaktiyan that is very understandable to the farmers and field workers. So the recommendations that we have consolidated all the recommendations for natural resource management sessions. So I'm just reading it out. The first one was to promote the adoption of eco-friendly solar insect trap in agriculture practice to reduce pest-related crop losses and minimize the environmental impact. The second one is the research should be promoted on the sub-basin prioritizations using remote sensing and GIS for water management, involve local communities to protect the soil where it needed the most. Also, studies advocates the widespread implementation of blended learning in agriculture education to enhance the knowledge disseminations and skill development. A plan has been emphasized that should be developed for the long-term sustainability of web application, including the regular updates, maintenance. So promote the web GIS technologies to disseminate the big data applications, so we can visualize the big areas in a graphical manner. Similarly, the groundwater potential zone assessment is considered to be a good technology that has been proven by a study that has been paper presented by Mr. Deepak. So it should be the make to ensure the easy access of groundwater potential zone maps and data for the policymakers, local authorities and public through user-friendly online platforms, promoting the informed decision making. Another one paper, we have consolidated report like share the water productivity data and, with the local agriculture authorities and collaborate on sustainable irrigation and crop planning research. Also, the studies recommends to promote the use of pit infiltration techniques to recharge the groundwater, particularly in the area facing the water scarcity. Advanced researches on the GIS-based spatial interpolation methods to be promoted to accurate phosphorus availability mapping, benefiting the soil and nutrient management. Keep using the GIS techniques for mapping the salinity, alkalinity areas and promote the water resistance crop choice and irrigation techniques in the area with the poor water quality. Critical areas needs to be identified using the groundwater trend analysis and suitable management studies need to be drawn for the efficient water utilizations. The last one is encourage the integration of artificial intelligence tools and techniques in agriculture practice to enhance the efficiency, yield and resource management. Thank you very much.
Thank you, Dr. Saurabh. I just not mentioned that in case the first session, the judges were from different places. The first was Dr. S.H. Thackeray from Akola, Dr. C.S. Sahai from CIA Bhopal, and Dr. Manish Patel, JNKV Jabalpur. They were the judging posters in the first technical session. The second technical session on NRM, the oral presentations were judged by the chairman and co-chairman of the concerning technical session. But in the poster session, the judges were Dr. M.P. Tripathi from IGKB Raipur, Dr. Surendra Kalbande from Akola, and Engineer Avadhesh Nema, Deputy Director Agriculture from Bhopal. The poster presentation, the third position is again shared by two persons. One is Dr. Popat Shivaji Pawar, NHEP Jabalpur, and Dheeraj Khalku from IGKVV Raipur. Dr. Popat. Dr. Dheeraj Khalku, pit filtration technique for groundwater recharging. Dheeraj is not here? Hi, please. The second position is achieved by Dr. Surendra Kalbande and others on development of eco-friendly, low-cost, modified solar insect trap. सभी विनर्स को बहुत बहुत बधाइयां और जोरदार तालियां उनके लिए. The first position is achieved by Dr. Saurabh Nema on assessing groundwater trends in water scarce basin, a case study of Satna and Rewa district of Madhya Pradesh. Dr. Saurabh. I'm sorry, this was the oral presentation judged by the chairman, co-chairman, and now the poster presentation. The third position is achieved by again two persons. There was so much competition, I think. The third position is shared by Shriya Baghel and Yogesh Narayan Srivastav. Yogesh Narayan Srivastav. Shriya Baghel is not here. And Yogesh, yeah. So both of them you can. Shriya, Tripathi ji, please. Shriya Baghel ji. Yogesh Narayan Srivastav. अरे रख के लिया. The first or second is सर उसमें एक सेकंड था एक्चुअली. एक सेकंड था, वो था थर्ड था जो आपने दिया. आपका? अच्छा, I'm sorry. Dr. Tripathi received that award. It was second position, and third is shared by Yatnesh Bisen on development and performance evaluation of horizontal filter for groundwater recharge. The second whole award. In natural resource management, the first position is achieved by Priyamvada M on integration of geomatics in assessment of critical areas in Chambal River Basin of Madhya Pradesh. Priyamvada M.
सभी प्रतिभागियों का जोरदार स्वागत और पुनः धन्यवाद. And I call now Dr. Ajay Kumar Gupta to read the proceedings of session 3, that is Food Process Engineering and Technology. Dr. Ajay Gupta. Good afternoon, all the dignitaries present on the dais and all the delegates present in this hall. I am Ajay Kumar Gupta, going to present the report of technical session number 3, that was for food process engineering and technology. The session was held at SBRA auditorium during 11 a.m. to 1:30 p.m. Sir, this session was chaired by Dr. Nachiket Kotwaliwale, Director ICAR-NAHEP Ludhiana, and Dr. Mohan Singh, Professor and Head, Department of Post-Harvest Process and Food Engineering, JNKVB, Jabalpur. Dr. Nachiket Kotwaliwale and Dr. S. Patel, ex-professor IGKB, delivered lead lectures on some newer frontiers in post-harvest processing of agricultural commodities and scope and opportunities in processing and value addition of millets for entrepreneurship development, a way forward. In total, 8 papers on various aspects of food processing and value addition were presented by the scientists and research scholars. 8 papers were presented orally during the technical session, which was held on 13th of September 2023 at SVRA Hall. The technical committee experts evaluated the research paper presented by the delegates and recommended various measures to improve the processing methods for the field crops. Importance of application of IoT and artificial intelligence-based processing machineries and operations was realized during the technical session. Design of region-based smart processing machinery and popularization among the growers and young entrepreneurs was also recommended. Dr. Nachiket Kotwaliwale discussed the changing scenario of food crops management and its contribution to national GDP. He also emphasized that there must be a shift as far as the losses are concerned. It should be from qualitative assessment, quantitative to the qualitative loss for food, as the national priorities are shifting from food securities to the nutritional security. As most of the losses occur at the initial stages of the processing, hence on-farm processing assumes greater importance. Dr. Nachiket underlined the importance of role of agricultural university and colleges for adoption and popularization of machines developed indigenously. Advanced technological solutions like RFID, probiotics, 3D printing should be adopted to ensure national nutritional security. Dr. S. Patel emphasized the inclusion of millets in the dietary system to ensure the nutritional security, as these are rich in fibers and minerals with low glycemic index. Papers presented by delegates on various aspects such as green cotton biomass, greenhouse technology, ohmic heating, technology for grading of vegetables, drying of pudina, and application of AI and IoT in agriculture and food process engineering. Thank you. Thank you, Dr. Gupta, for third session presentations. For oral awards, I'll read there are only 3 persons getting first, second, third here. Shesh Rao Kautbar for silage from green cotton biomass, an alternative source of animal feed. Please come on the dais. Third position goes to Shesh Rao. Second position to Mahendra Daheria and others on grading of tomatoes by zero energy multi-fruit grader.
Mahendra Deharia, please come here on the dais. And first prize on oral presentation goes to Ms. Aradhana Patel and Mohan Singh, effect of ohmic heating on the recovery of head rice and parboiled paddy. Aradhana Patel. The posters presented here, third prize goes to Suchita V. Gupta on cultivation of spinach in hydroponic structure with nutrient film technique. Suchita V. Gupta. The second prize goes to P.H. Bakane and V.8 Sengekar, development of continuous dal mill plant for milling of grass pea. P.H. Bakane, are you here? Yes, sir. Yes. And the first prize goes to Dr. S.K. Jain and others on development of bamboo houses for enhancing agro-tourism. Dr. S.K. Jain from Dapoli. Thank you, sir, once again. And now I call upon the fourth session presentation by Dr. Akhilesh Tiwari. The session was on protected cultivation and mechanization for horticulture crops. Dr. Akhilesh Tiwari. Most respected dais, the technical session 4 was on the theme of protected cultivation and mechanization for horticulture crops. The chairman was Dr. S.K. Pandey Saab, Dean Faculty of Horticulture, JNKVV Jabalpur. Co-chairman Dr. Avani Kumar Singh, Principal Scientist, ICAR New Delhi. The reporters were Dr. Akhilesh Tiwari, myself, and Dr. Reena Nair. The Chairman Dr. S.K. Pandey, Dean Faculty of Horticulture, started the session with the introductory remark on the mechanization in horticulture crops along with the protected cultivation in order to increase the productivity of the horticulture crops and invited speakers for their presentation on the given theme. The first lead speaker was Dr. Avani Kumar Singh, Principal Scientist, IRI, New Delhi, and he has given a lead lecture on protected cultivation and mechanization for horticulture crops. He especially emphasized on cultivation of vegetables under protected structure to get manifold improvement in yield along with the quality production. Mechanization in horticulture would also make additional improvement in terms of quality and energy saving process. After the lead lecture, there were 5 oral presentations made by the various scientists. The first speaker explained the best use of protected structure for quality seed production of vegetable crops to maintain the genetic purity and disease-free seed materials. The second speaker presented about the mechanical decorticator for mahua seeds, which could minimize the time and labor consumption as compared to the traditional method. The third speaker explained the standardization of hardening of process of tissue culture banana plants with the use of the media, soil, sand, FYM, and foliar potassium nitrate, recorded maximum survival, plant height, pseudostem girth, number of leaves, etc. The fourth speaker stated
the issue of moisture stress in coriander, which could be addressed by scheduling the irrigation as IWCP ratio 0.8 with the foliar application of salicylic acid at the rate of 150 ppm with receiving good seed yield of coriander. The fifth speaker introduced the micro budding technique as mandarin as a budded on lime root stock. The mandarin showed minimum days taken to first sprout after micro budding, maximum micro budding success, length of micro budded sprout, number of leaves per plant, stalk diameter 90 days after micro budding was recorded in rough lemon root stock seedlings. So after this, besides, there were 6 poster presentations made in the session. The presenter explained their work. The major emphasis were given on importance of horticulture interventions for livelihood elevations, application of drones, remote sensing, GIS, AI and IoT in horticulture, impact of conservation tillage and weed management, protected nursery raising, nutrient indexing of mango orchard, preparation of mixed fruit bar and mechanization horticulture crops. The committee had discussed thoroughly on every aspect of horticulture innovations. Chairman Dr. S.K. Pandey concluded the session with the following recommendation as per the discussion made. The first recommendation was protected structures should be designed on need base, including scientific recommendations for fertigation and mechanization. Second was upscaling of seed production programs of vegetables should be taken into consideration for quality and disease-free seed materials, including hybrids. Research strategy should be prepared for organic and natural farming of horticulture crops under protected structures. Fertigation and irrigation scheduling should be standardized for abiotic stresses. Root stock breeding strategy should be prepared to address various biotic and abiotic factors. Mechanization in horticulture crops along with the precision farming should be improved in order to increase the productivity of the horticulture crops. Mechanization should be introduced to small farmer groups to save time and for value addition. Introduction of artificial intelligence and IoT is required for more precision horticulture operations. Awareness and training of farmers in the area of farm mechanization and remote sensing, GIS, drone technology, etc. should be created for better future agriculture. So these were the final recommendations coming out from this session. Thank you very much, sir. This was an important session for horticulture. It covers at least 50% part of the total topic, agriculture and horticulture. Third position in the oral presentation goes to F.M. Sahu on development and performance evaluation of a Mahua seed decorticator, and it is shared by Bharti Chaudhary, effect of rootstock age for success of microbudding in mandarin. I congratulate both of them. They are real competitor. Please. And the second one goes to Ankita Sharma. Yield components of and water use efficiency in coriander as influenced by bioregulators and varied irrigation regimes based on IWCPA ratio. And the first prize goes to our own horticulturist Akhilesh Tiwari and others on quality seed production of vegetable crops under protected structures. This was the oral presentation. बहुत बहुत बधाइयाँ winners को. The third position in the poster session goes to Nikita Dilip Dapurkar. Is she here? Nikita, feasibility of emerging technologies for artificial pollination in fruit crops. And the second goes to, third is again shared by
Rajni Sharma and others on standardization of different processing variables to develop a mixed fruit bar of guava and sapota. Congratulations. Second prize goes to Jyoti Lohare and others for vegetable pea yield estimation using remote sensing and GIS. Jyoti Lohare. Congratulations. And the first position acquired in posters is by Srishti Pal, computation of carbon sequestration of mango orchards in Jabalpur district using geoinformatics. सभी विनर्स को बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। और हमारे मंचासीन अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बार बार कष्ट दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और मैं अब आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में आज उपस्थित हैं हमारे डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी। मैं उनसे निवेदन कर दूंगा आज के इस अवसर पर हमें अपना मार्गदर्शन दें। डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी। आज के इस आयोजन में उपस्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के माननीय प्रेसिडेंट आदरणीय इंजीनियर रॉय, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर धीरेन्द्र खरे जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर गुप्ता, डायस पर बैठे सभी आदरणीय महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित सभी विशिष्टजन, छात्र एवं छात्राओं, ये बहुत हर्ष का विषय है कि बहुत मेहनत के बाद एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की छोटी सी टीम ने एक बड़ा आयोजन किया। किसी भी आयोजन के पीछे जो मेहनत होती है वो हम सब जानते हैं, और फिर जब आयोजन में अलग अलग जगह से अपने विशिष्ट जन, जिनसे कि इंटरेक्शन प्रायः कम होता है या नहीं हो पाता हमारे स्टूडेंट्स का, हमारी फैकल्टी का, उनका सबका एक जगह समागम होना, ये बहुत ही मेहनत की बात है। और मैं इसके लिए डॉक्टर श्रीवास्तव को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को इस एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिलवाया जिसपे कि अलग अलग जगह से डिग्निटरीज ने, जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने जो भी काम कर रहे हैं उससे हम सबको अवगत कराया। यहाँ पर 4 सेशंस हुए। हमने देखा अभी अलग अलग रिपोर्टर्स ने बहुत अच्छी रिपोर्ट्स पढ़ी, चाहे वो एनआरएम सेशन हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का हो, फूड प्रोसेसिंग वाला हो, जो भी काम अलग अलग जगहों पर चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो संक्षेप में हम सबके सामने अभी आई। मैं इस आयोजन के लिए पुनः सबको धन्यवाद देते हुए आशा करता हूँ कि जो रिकमेंडेशंस हैं, जो इंटरेक्शन हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिला, उसका लाभ उनको आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। और साथ ही साथ मैं उन महानुभावों का धन्यवाद देता हूँ इस विश्वविद्यालय की ओर से, जिन्होंने यहाँ पर आकर हम सबको मार्गदर्शन प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your valuable and brief comments. और अभी जिनका जिक्र हो रहा था हॉर्टिकल्चर के सेशन का, हमें खुशी है कि डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर हमारे बीच में हैं। आज सुबह से ही सेशन का भी चेयर उन्होंने किया और उनके
एवोल्यूशन भी किए, लगातार हमारे साथ पूरे आयोजन में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मार्गदर्शन दिया है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपना मार्गदर्शन हमें दें। डॉक्टर एस.के. पांडे, डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर। धन्यवाद डॉक्टर नेहरू साहब। आदरणीय मंच, उपस्थित पार्टिसिपेंट्स और पूरे देश से आए हमारे इंजीनियर्स, विशेष रूप से आज के अध्यक्ष इंजीनियर राय साहब, डॉक्टर खरे साहब, डॉक्टर शुक्ला जी, डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी, एक 2 दिन का जिसको हम कुंभ कहें एक तरह से तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूरे देश से विभिन्न स्थानों से विभिन्न परिस्थितियों में समय निकालकर सभी ने अपनी जो प्रस्तुतियां दी, जो भी रिसर्च वर्क हमारे देश के विभिन्न भागों में चल रहे, चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड हो, हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन से रिलेटेड हों, या और भी जो अन्य क्षेत्र की उपलब्धियां हैं, वो आज हमारे सामने रिकमेंडेशन के रूप में आई। मैं इस आयोजन के लिए विशेष रूप से डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी और डॉक्टर नेमा जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनके मार्गदर्शन में, और निश्चित रूप से हमारे डॉक्टर श्री मेहता साहब, हमारी उनसे मुलाकात होती रही, उनका जो मैनेजमेंट रहा साथ में, निश्चित रूप से ढिमोले जी और भी हमारे जो अन्य अग्रवाल साहब भी निरंतर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। इन सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम 2 दिन का संभव हो पाया। मैं इस अवसर पर आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और पुनः जो दूर दूर से पधारे हैं, उन्होंने जो कष्ट किया, उसके लिए अगर इस समय उनके एकोमोडेशन या किसी भी तरह की असुविधा हुई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और निश्चित रूप से कुछ थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हुई होंगी, लेकिन उसको ओवरलुक करेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और इसी तरह से भविष्य में भी जैसे जबलपुर में एक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें शायद प्रेसिडेंट साहब, मैडम प्रेसिडेंट का आने की संभावना है, तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनका जो एक संगठन है, उसके मार्फत ये आयोजन मिला, और उसमें हार्टिकल्चर की भी बहुत सी चर्चाएं हुई, बहुत से अनुसंधान जो हो रहे उनको सामने रखा गया। तो निश्चित रूप से वो सभी सहभागी जो हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इस सफल आयोजन के लिए विशेषकर मैं पुनः डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और हमें आज अपने सुयोग के कारण कहिए या ईश्वरीय सहयोग के कारण कहिए, जो मुख्य अतिथि के रूप में प्राप्त हुए हैं, डॉक्टर शिवानंद रॉय जी, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया के, और सेवानिवृत्त इंजीनियर इन चीफ झारखंड के जो रहे हैं। मैं सर आपको बता दूं कि कल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से 3 यंग इंजीनियर्स को, 3 एमिनेंट इंजीनियर्स को और 5 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ से प्रदान किए गए थे। साथ में मेमोरियल लेक्चर हुआ और इसके भी साइटेशन हमने दिए थे। और इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 15 पब्लिकेशन भी रिलीज हुए थे, अलग अलग एस्पेक्ट पर, रिमोट सेंसिंग जीआईएस पर, मैकेनाइजेशन के ऊपर, और 5 मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस भी रिलीज हुए थे। इन सब कार्यक्रमों में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के आपके पदाधिकारीगण हमें समग्र रूप से सहयोग प्रदान करते रहे हैं, और उनको विशेष धन्यवाद देते हुए मैं सर आपसे अनुरोध करूंगा कि हमें इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय इंजीनियर शिवानंद राय जी।
सदस्यों एवं हमारे युवा साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज का दिन ही इस बैठक के लिए चुना गया। स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग फॉर द इंजीनियरिंग कांग्रेस एट जबलपुर। जबलपुर में इंजीनियरिंग कांग्रेस चुना गया, वो संयोग था कि मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरा पहला डिसीजन, 13 अगस्त को मैं प्रेसिडेंट बना और जाके काफ़ी, हम लोग इंजीनियर हैं और देश के कोने कोने से आते हैं, तो हर जगह का होता है कि नहीं इनको दे दो, इनको दे दो। मैंने सबका सुना और तब मैंने जुडिशियस डिसीजन फाइल मैंने पहला यही मंगाया कि मेरा ये था कि एक्चुअली थोड़ा हल्का पीछे ले जाना चाहूँगा कि जब हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो बीच सेशन में वो छोड़ के चले गए किसी न किसी कारण से, व्यक्तिगत हो या जो भी हो। ये 4 महीने के लिए मुझे प्रेसिडेंट का काम ऊपर वाले ने, भगवान ने सौंपा है। ठीक है, मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। जब मुझे 4 महीने के लिए, पहले नागपुर में जब 3 सितंबर को इलेक्शन हो रहा था तब भी मुझे पता था कि मैं प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूँ, लेकिन नहीं बना, बराबर वोट आ गए, लॉटरी हुआ, डिसीजन जाए। लेकिन इस बार मुझे 13 अगस्त को पहली बार इंस्टीट्यूशन के हिस्ट्री में हुआ कि जिस दिन चुना गया उसी दिन से गले में पट्टा डाल दिया। तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन के जितने मेरे 9 लाख कॉर्पोरेट एंड स्टूडेंट मेंबर्स हैं, उन सबकी जवाबदेही मेरे ऊपर उसी दिन से आ गई। तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं हेडक्वार्टर जाऊंगा। मैंने 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग किया और इस बीच पहले से मेरी दो कार्यक्रम थे जो मेरे जहन में थे, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और इंडिया के इंजीनियर्स का पर्सपेक्टिव, मतलब छवि बननी थी। एक था E20 G20 नेशंस का एक ग्रुप है इंजीनियर्स 20। ये G20 को सप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। इसके लिए एक आयोजन था, डेट में भूल रहा हूँ, 24-25 या था अगस्त। मैं लगातार चूँकि इंस्टीट्यूशन के दौरा कर रहा हूँ, तो उसमें था कि उसमें 9 देशों के लोग आए ऑफलाइन और बाकी देशों के लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े। ये चूँकि इंटरनेशनल सेमिनार था, ये पहले से प्लान था, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरा पहला था कि एक तो वो इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इसको सफल बनाना है ताकि हमारे देश की छवि अच्छी बन सके। दूसरा था इंजीनियरिंग कांग्रेस। इंजीनियरिंग कांग्रेस के लिए 6 महीने तैयारी करनी पड़ती। आपने अभी इतना अच्छा कन्वेंशन किया, इसके लिए कम से कम 3 महीने से आप तैयारी कर रहे होंगे, कम से कम। प्लानिंग बहुत पहले अप्रूवल हुआ होगा, तब से आप लोग बैठ रहे होंगे, कहाँ करें, किसके साथ करें, किनका सहयोग लें। इंजीनियरिंग कांग्रेस के लिए कम से कम 6 महीने समय लगता है। वो समय बीत चुका था क्योंकि पहले वाले प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर पा रहे थे, परेशान थे। तो मेरे जहन में थी कि अगर इंजीनियरिंग कांग्रेस अच्छे से नहीं होती है तो इससे हमारे इंजीनियरिंग कांग्रेस मतलब सारे देश के इंजीनियरों का जमावड़ा, तो वो अच्छे से नहीं होगा। तो मैंने मेरे ऊपर काफ़ी दबाव तरह तरह का था। 16 तारीख को मैंने फाइल मंगवाया और उसमें स्पष्ट दावा था जबलपुर का कि जबलपुर को ही मिलना चाहिए। उसके बहुत छोटा सा कारण था, हमारे 4 जोन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। तो चारों जोन में रोटेशन से हम लोग ने एक परंपरा बना रखी है कि प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो जब 4 जोन में रोटेशन से चुनते हैं तो कांग्रेस भी 4 जोन में रोटेशन से होना चाहिए। लेकिन जब मैंने पिछले 7 साल का रिकॉर्ड मांगा तो 3 बार साउथ जोन, 2 बार नॉर्थ जोन और 2 बार ईस्ट जोन में हुआ था। वेस्ट जोन में 1 बार भी नहीं हुआ, जबकि 8 साल में 2 बार होना चाहिए था। तो मैंने कहा कि साहब वेस्ट जोन में ये जबलपुर का प्रस्ताव है, 4 साल में 1 बार मिलना चाहिए, 8 साल में तो 1 बार होना ही चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि
जाने में दिक्कत होगी। वहाँ छोटा फ्लाइट जाता है तो चेंज करके जाना पड़ता है। तब मैंने सीधा कल आप तो नहीं थे सर, आज मीटिंग में थे ना सर? आप लोग नहीं थे, आप भी नहीं थे। कल बात हो रही थी तो एक सर्जन ने कहा कि, मैंने कहा कि सर हम लोग इंजीनियर हैं, अगर हम जाने से डर जाएंगे तो बाकी लोग कैसे पहुंचेगा वहाँ? इंजीनियर को, एग्रीकल्चर इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, वाटर इंजीनियर हो, वो अगर पहाड़ों पर नहीं पहुंचेगा, देहात में नहीं पहुंचेगा तो इरिगेशन कौन देगा? सिंचाई एग्रीकल्चर कौन सिखाएगा? तो जबलपुर से अच्छा कोई जगह नहीं है जहां सूटेबल होगा, और जबलपुर को इंजीनियरिंग करने के लिए ये अलग बात है कि जबलपुर से मेरा रिश्ता मतलब मध्य प्रदेश से 43 साल पुराना है, क्योंकि मेरी ससुराल भोपाल में है। मैं पटना बिहार का ओरिजिनली हूँ और झारखंड में सर्विस करते हुए सेवानिवृत्त हुआ 2016। तो सर कुछ लोग कह सकते हैं कि आपने कुछ फेवर किया होगा, लेकिन मैंने वही किया जो जबलपुर को मिलना चाहिए था। तो और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई कि हमारे इंजीनियरिंग कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के मीटिंग में हमने हमारे 3 काउंसिल मेंबर एग्रीकल्चर के आए हुए थे। सिक्किम से चौहान साहब, छत्तीसगढ़ से हमारे पांडे साहब और नेमी चंद्रप्पा साहब हमारे चेयरमैन बोर्ड के। उन्होंने खड़े होके पूरी मीटिंग के बीच में खड़े होके, जब मीटिंग खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू स्पीक समथिंग, और उन्होंने जितनी प्रशंसा की इस आयोजन की तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि हमारे जबलपुर में अब हमारे कांग्रेस को सबसे अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो हुई कांग्रेस की बात। अब जहाँ तक बात है सर, सिंचाई, मैं वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर हूँ। मैंने डैम बनवाए हैं, मैंने वैसे जगह पे डैम बनाए हैं जहाँ की उग्रवादी इतने ज़्यादा थे कि कोई सोच नहीं सकता था कि ये डैम कंप्लीट हो। लेकिन जब इरिगेशन इंजीनियर जाके आप अच्छे मन से काम करते हैं तो सारे उग्रवादी आपके पीछे हो जाते हैं। सर मैं एग्जीक्यूटिव ने मेरी पोस्टिंग हुई झारखंड बनने के जस्ट बाद गुमला जिले में, सर जानते होंगे, बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़। वहाँ दिन में जाने में, कलेक्टर को जाने में 100 आदमी का फोर्स लेके जाता। 2 दिन पहले सर्वे होता था कि कहाँ छुपा हुआ है, और वहाँ मैं 6 साल नौकरी किया, डैम बनवाया और एक बार भी किसी की जरूरत नहीं पड़ी। और जब मैं सेक्रेटेरिएट में जाता था तो सर सेक्रेटेरिएट के यहाँ बच्चे हैं, उनके सामने चर्चा करना ठीक नहीं होगा, केवल प्रोफेसर लोग रहते और ऑफिसर्स लोग रहते तो चर्चा करता। सेक्रेटेरिएट में जाके मेरा यही कहना रहता था कि जितना खतरनाक उग्रवादी लोग हैं उससे ज़्यादा खतरनाक सेक्रेटेरिएट में लोग हैं। ये मैं बच्चों को नहीं बिगाड़ूंगा, बच्चे आज स्वच्छ मन से आए हैं और काफ़ी उत्साहित हैं, प्राइज मिल रहा है इनको। लेकिन फैक्ट यही है जो कि कभी प्रोफेसर लोग को भी, वाइस चांसलर लोग को भी, डीन लोग को भी कभी सेक्रेटेरिएट से पाला पड़ा होगा तो समझ में आ गया होगा कि हमारी सारी प्रोफेसरी खत्म, यहाँ का बाबू ही सबसे बड़ा है। सर जो अनुभवी लोग हैं वो मेरा इशारा समझ रहे होंगे। मैं सेक्रेटेरिएट में एक बार ऐसा हुआ सर, थोड़ा ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ ना, मैं सर लिख के नहीं बोलता हूँ। मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं पीएचडी भी नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। मैं बीए पास हूँ, बीए पास, बीटेक मीन्स बीए, आई एम ए ग्रेजुएट इंजीनियर। तो सर सेक्रेटेरिएट में ऐसा हुआ कि मेरे एक इंजीनियर इन चीफ बने, जिनको मैंने एसोसिएशन की तरफ से, जब वो प्रॉब्लम में थे, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख के उन्हें प्रॉब्लम से बचाया। लेकिन जब वो इंजीनियरिंग चीफ बन गए और गुमला जिले में ये था, कहीं भी अगर बंद का हंगामा हो जाए कि बगल के ज़िले में छत्तीसगढ़ में बंद है तो गुमला में भी चाय की भी एक दुकान नहीं खुलेगी, इतना ज़्यादा वहाँ ये था। मैं गुमला जो है 1.5 घंटे की दूरी पर है, 90 किलोमीटर रांची से। तो मेरे जो कलीग थे वहाँ के, मेरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो लोग रांची से
अपना आना जाना ज़्यादा करते थे और मैं परिवार के साथ गुमला में रहता, मुझे डर नहीं लगता। तो हुआ क्या कि एक दिन उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में वो हमारे 2 कलीग और मेरे सीनियर अफसर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पहुंच गए, मैं नहीं पहुंचा। तो वहाँ से चीफ इंजीनियर ने फ़ोन किया कि राय साहब ये ENC साहब आपको बात करना चाहते हैं। तो ही वॉज नोन टू मी, क्योंकि उनका मामला मैंने सल्टाया था एसोसिएशन की तरफ से। तो उन्होंने यही कहा, आप लोग सब समझते होंगे हिंदी भोजपुरी टाइप, कहा राय जी नेतागिरी नहीं छूटेगा आपसे, क्योंकि नेता के रूप में मैंने उनको क्लचेस से बचाया था। तो मैंने कहा कि क्या हुआ सर, आप बोलते हैं कि वहाँ बंद है, नहीं आ सकते हैं, और बाकी ये लोग 3 आदमी यहाँ कैसे आ गए। मैंने कहा कि सर एक ऑर्डर निकाल दो कि सबका हेडक्वार्टर रांची ही रहेगा, वो सब रांची से आया है, सामने से बता के पूछो। चुप, चूंकि मैं गुमला में रहता था, वहाँ से नहीं आ सकता था वो रांची। तो मैं ये अब बच्चों को भी सुनाना चाहता हूँ कि अगर कहीं गलत दिखाई दे, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें गलत तरीके से डांटे, मुंह पे जवाब दो, पोलाइटली जवाब दो, लेकिन जवाब दो, तभी इंजीनियर का प्रतिष्ठा बढ़ेगा, जो साइंटिस्ट का प्रतिष्ठा बढ़ेगा, प्रोफेसर का प्रतिष्ठा बढ़ेगा। नहीं तो करेगा क्या कि आप पूरा गलती वो कर रहा है, पूरा गलती आपका सिस्टम कर रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा सर, अगर आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं, वहाँ का जो पेशकार होता है जज साहब के सामने पैसा लेता है, वो गलत नहीं है, लेकिन आप कहीं किसी चीज़ में किसी तरह का एडजस्टमेंट करते हैं तो आप चोर हैं। तो आपको ये जवाब देना होगा कि नहीं आप भी हैं, आईना दिखाना होगा, तभी इंजीनियर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रोफेसर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम करने वाले लोगों की इज्जत होगी। तो सर ये मेरा यही कहना है कि अपने आप को पहले अपना मोरल वैल्यू बढ़ा लो, फिर आपको उग्रवादी भी इज्जत करेगा और आपको सलाम करेगा। अब है जहाँ तक किसान और सिंचाई, तो सर मैं खानदानी किसान हूँ। मेरे दादाजी किसान थे, मेरे पिताजी केंद्र सरकार की सेवा में थे, मैं दिल्ली में भी पढ़ा हूँ। जब मैं गांव में जाता था तो दादाजी को मैंने नहीं देखा, दादी मेरी थी। तो उस समय ये सिस्टम था कि कोई भी चीज़ अगर खरीदना है, जैसे आम बगीचे में हो जाता था, केला भी मेरे अहाते में था, अमरूद नहीं था, माँ ने बोल दिया कि इसको अमरूद अच्छा लगता, तो दादी आके एक पोटली चावल देती थी और बोलती थी कि उसके घर दौड़ के चले जाओ किसी को साथ में करके और वहाँ से अमरूद ले आओ। पैसा नहीं चलता था, पैसा बहुत कम चलता था। उस जमाने के भी कुछ लोग होंगे कि सामान से ही सामान खरीदा जाता। अगर बाल कटवाना है तो उनका भी पेमेंट चावल से ही होता था। क्या सर, आप लोगों ने कभी देखा होगा, क्योंकि आपने नहीं देखा है, आपने सुना होगा। जो मेरे हम लोग हैं 65-70 साल के, उन्होंने देखा होगा। तो सर उस समय मैं अपने चाचा जी के साथ, हमारे परिवार के एक चाचा जी खेती देखते थे, उनके साथ मैं ट्यूबवेल पे सोने चला गया, एंजॉय करता था, कहानियाँ सुनता था ट्यूबवेल पर या खलिहान में। तो सर किसान सिंचाई और एग्रीकल्चर अलग अलग हो ही नहीं सकता, दोनों एक दूसरे का पूरक है और दोनों मिल के ही कुछ करते हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग विधा है, सिंचाई में भी है, अब हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया, आपके यहाँ एग्रीकल्चर में भी अलग अलग हो गए, लेकिन सबको जोड़ के रखने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ही एक फोरम है, जिसमें 15 के 15 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एक साथ हम बैठते हैं और एक साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अगर कहीं केबल बिछाना है बिजली वालों को या टेलीफोन वाले को, तो उनको रोड के इंजीनियर से बात करना ही होगा। हमने आजकल क्या बना दिया है कि कोई भी बात करना होगा तो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के थ्रू बात करते हैं और सारा का सारा गड़बड़ी वहीं से होती है। अगर हम आपस में इंटरेक्ट करें, PWD के लोग, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लोग, BSNL के लोग, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग आपस में रिलेशन बना लें, मिलते जुलते रहें, तो सारा समस्या मेहता साहब क्या है का पोल अगर मेरे रोड के ऊपर से जा रहा है और मुझे रोड को डैम को थोड़ा बैंक को ऊंचा करना है, तो मैं इनसे बात करके क्यों नहीं उसको सेट कर लूँ।
कि इनके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के थ्रू आऊँ। यही कमी हो रही है कि हम लोग कोई भी काम डायरेक्टली मिल के नहीं करते। अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ऐसा फोरम है जिसमें कि एक दूसरे से संबंध बनता है, भाईचारा बनता है और बहुत सारी समस्याएं आपस में ही बैठ के सुलझ जाती। तो इंस्टीट्यूट मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ सर, 13 अगस्त से लेके आज 13 सितंबर है, ये 12वां सेंटर है जहाँ के इंजीनियर्स के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ लगातार, और हर जगह के इंजीनियर्स के साथ उनकी समस्याएं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। मेरा कहना है सर कि यहाँ सब जगह लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का मेंबर बनोगे सर, अदरवाइज नहीं लेंगे। चेयरमैन सर, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के जो पदाधिकारीगण हैं बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में आपको गेस्ट हाउस में मिलेगा, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, जर्नल मिलेगा, आपको आपका स्प्रिंगर जर्नल में छपेगा, आपको कोई चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। वो भौतिक चीज़ें हैं सर, जो आपकी भाईचारा बनता है वो बहुत दिन काम देता है और हमेशा काम देगा। तो मैं आज के बच्चों को आह्वान करता हूँ कि आप हमारे मेंबर बने, इसमें आपका भाईचारा बनेगा, एक दूसरे से पहचान बनेगी और ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आपकी समस्या का समाधान हमारे जो सीनियर्स हैं, हम लोग हैं, उसको खोज के लाके आपको दे सकते हैं। इसलिए भाईचारे के लिए मेंबर्स को, और 12 सेंटर घूमने के बाद लोगों की समस्याएं समझती। किसी ने कहा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का मेंबरशिप का फीस काफ़ी बढ़ गया, तो पता नहीं सर, मेरे ज़माने में जो लोग बने थे उस समय करीब 2000 रुपये लगा होगा सर, 1975 रुपया, आज हो गया है 7000। जीएसटी अगर लगा दें तो 8000। सर 30 साल पहले अगर 1975 रुपया लगा, आज अगर 8000 लग रहा है तो कैसे महंगा हुआ मेरे समझ में नहीं आता। कैलकुलेट करके देख लें, जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी 79 में 510 रुपया पे मिलता था, आज जो स्टार्टिंग पे 70,000 से कम नहीं होता है, तो उस हिसाब से 8000 पर। फिर भी जो बच्चे यंग हैं, जो जिन्होंने अभी नौकरी शुरू की है या अभी नौकरी नहीं की है, वो अगर इंस्टीट्यूशन का मेंबर बनना है तो उनको अभी 5000 रुपया लगता है, 900 जीएसटी। तो सर मैंने प्रेसिडेंट बनने के 1 महीना मेरा हुआ है, ये 4 दिन पहले मैंने डिसाइड किया है कि मेरे टेनियर में जो बच्चे एएमआई बनेंगे, एसोसिएट मेंबरशिप लेंगे, उनको मैं 20% डिस्काउंट प्रेसिडेंट की तरफ से दूंगा, इंस्टीट्यूशन के पैसा से नहीं, आपसे मांग के 20% डिस्काउंट उसको इंसेंटिव दूंगा। ये मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ इस काउंसिल में, ठीक है। उसमें मुझे जहाँ से सहयोग मिल रहा है, कोई कह रहा है कि 50 का मैं दूंगा, कहीं से हो रहा है कि मैं 100 का दूंगा, 250 का मेरे को मिल चुका। मेरे पास पैसा नहीं है सर, मेरा पॉकेट फटा हुआ है, लेकिन कभी खाली नहीं रहा अगर मैंने आह्वान ठान लिया। तो मुझे लगता है कि काउंसिल मीटिंग में पहुंचते पहुंचते पांडे साहब, मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि 1000 का मैं सब्सिडी तैयार करूँ। तो नए बच्चों को अब ये बताएं कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सर इस बार हमारे बीआईटी सिंदरी एलुमनी का मीट हर साल होता है रांची में। मीट में संयोग से रांची में था और जब भी जाता हूँ तो जाता हूँ। मैं गया तो एक बच्ची, एक छोटा सा बच्चा गोद में लेके दौड़ी हुई है, साथ में उसका हस्बैंड भी था। आके उसने मेरा पैर पकड़ के मुझे प्रणाम किया। मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आया कि भाई इतना ज़्यादा क्यों, अरे कोई भी एलुमनी मीट में जाता है तो हाथ जोड़ता है, ये इतना क्यों उत्साहित है मुझसे मिलकर। तो बोली सर मुझे आपने पहचाना नहीं। हमने कहा बेटा कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ, तो आप ही के चलते मैं पीडब्ल्यूडी में सर्विस में हूँ। मैं कहा मेरे चलते क्यों हो, तुम इंजीनियर हो, नौकरी में हो, बीआईटी सिंदरी से हो। तो नहीं सर मैं बीआईटी सिंदरी से नहीं हूँ, मैं दूसरे कॉलेज से हूँ, मेरा हस्बैंड बीआईटी सिंदरी का है और मैं दूसरे कॉलेज से हूँ, लेकिन इंटरव्यू में आपने मेरा लिया। तो इंटरव्यू में केवल एक, जैसे इंटरव्यू बोर्ड में, सिलेक्शन बोर्ड में, इंजीनियर के सिलेक्शन बोर्ड में बीपीएससी का, जेपीएससी का मेंबर मैं नहीं था, लेकिन इंजीनियर्स का सिलेक्शन जब होता था असिस्टेंट इंजीनियर का और कभी कभी जूनियर इंजीनियर में भी,
मुझे बुला लिया जाता था एज ए चीफ इंजीनियर, एज इंजीनियरिंग चीफ। जब भी जिस हैसियत से रहा तो मैंने देखा फॉर मिस दिस एंड दिस BSc बीटेक इंजीनियरिंग AMIE। तो मैंने कहा अरे बेटा तुम तो इंस्टीट्यूशन के मेंबर हो। हाँ, अरे तुमको तो सब आता हो। और उससे उसको हौसला बना और उससे जो मैंने क्वेश्चंस किए वो मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस किए, थोड़ा सा लीनियंट हो गए। तो AMIE, MIE, FIE का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वंस मैं देखूंगा या आपके मेहता साहब देखेंगे या खरे साहब देखेंगे कि भाई इसके डिग्री के साथ AMI लगा हुआ है इसके परिचय में, उसको आपके प्रति एफिनिटी हो ही जाएगी और कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ सहयोग मिल ही जाएगा। इसलिए आप हमारे मेंबर बनो। 4,000-5,000 रुपया कुछ नहीं होता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन का मेंबर बनना मतलब कि सारे ब्रांचेज ऑफ इंजीनियर्स के साथ भाईचारा और पूरे देश के इंजीनियर के साथ आपका संबंध बन गया। इसलिए मेरा आह्वान है कि सारे प्रोफेसर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सर रिक्वेस्ट है कि कुछ बच्चों को प्रोत्साहित करें इंजीनियर बनने के लिए। और जो भी AMI बनेगा 30 साल से कम उम्र का बच्चा, 30 साल से अधिक वाले को सपोर्ट करने की ताकत आपके प्रेसिडेंट में नहीं है। 30 साल से कम वाले जो भी बच्चे बनेंगे मेरे टेनियर में उनको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा मेंबरशिप फीस में। इसलिए और उसका मेरा दूसरा मकसद भी है। जबलपुर जब मैं काउंसिल में गया तो उस समय बिलखड़े साहब थे यहाँ के, तो इन्होंने धीरे से मुझे कहा कि देखिए जबलपुर को काट पीट के और इसका एंसेस्ट्रल जो वैल्यू था, यहाँ का काउंसिल सीट हुआ करता था, वो समाप्त कर दिया गया। क्या सर मैं सही गलत बोल रहा हूँ? तो मैंने कहा कि भाई ये क्यों हुआ? तो जबलपुर से छत्तीसगढ़ निकल गया, जबलपुर से ये ग्वालियर निकल गया, हमारी संख्या घट गई। तो अभी मेहता साहब ने बताया कि करीब 2000 के लगभग आपकी संख्या 1900 के आसपास है। 600 नंबर बढ़ जाने पर जबलपुर को एक काउंसिल सीट मिल सकती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जबलपुर को काउंसिल सीट मिले। मैंने उस समय विरोध किया था कि जबलपुर का काउंसिल सीट आप नहीं ले सकते। पूरे काउंसिल में मैं नहीं विरोध किया, अकेले। बिलखड़े साहब थोड़े सज्जन हैं, वो धीरे से बोलते हैं, मैं थोड़ा कस के बोलता हूँ। तो मैंने कहा, लोगों ने कहा क्यों? क्योंकि अरे यार आप ये कर, इसमें एक सब्जेक्ट आपने रखा है हेरिटेज बिल्डिंग्स को बचाओ, हेरिटेज बिल्डिंग पर परिचर्चा करो, वर्कशॉप करो। अरे हेरिटेज सेंटर को भी तो बचाओ। ये मैंने लिख के दिया हुआ। आप बिलखड़े साहब से बात कर लेते सर, आपके सामने बात हुई है ना। तो मैंने कहा कि हेरिटेज जो है, जो सेंटर हमारा जो स्टेटस रखता है, इसको काट पीट के आप छोटा कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो ओरिजिनल स्टेटस है उसको कम नहीं करो। और अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं जानता हूँ कि 3 महीने अब तो 3 महीने का मीटर बचा है, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वकालत मैं हमेशा करूंगा कि जो सेंटर हमारा जिस स्टेटस में था उसको उस स्टेटस उसको कम मत करो। आप बढ़ा नहीं सकते हो तो कम कैसे कर रहे हो? तो मेरा है ठीक है, नहीं करेगा। 600 मेंबर आप लोग मिलके दे दो जबलपुर को और मैं इसको एक काउंसिल सीट दे। तो 4 महीने में आप 600 मेंबर दें और वो 600 अगर AMI बनेगा तो उसका 20% डिस्काउंट आपका प्रेसिडेंट देगा। और प्रेसिडेंट मतलब क्या? आपका प्रेसिडेंट। किसी से 10 का मांगेगा, किसी से 20 का मांगेगा, किसी से 50 का मांगेगा और उतना जुटा देगा, आपको देगा। तो रिक्वेस्ट है, ये मैं यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ कि यहाँ से कम 100 मेंबर मुझे मेरे टेनियर में दिए जाए। नेक्स्ट टाइम जब मैं कांग्रेस में यहाँ आऊँगा तो मेरी विदाई होगी, प्रेसिडेंट के पोस्ट से मेरी विदाई होगी। और विदाई के साथ साथ अगर मुझे एक काउंसिल सीट मिल जाएगा तो ये मेरे लिए आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा जबलपुर। तो मेरा आह्वान है कि इंस्टीट्यूशन के मेंबर बनो, भाईचारे के लिए बनो, किसी भौतिक लाभ के लिए मत बनो। भौतिक लाभ आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। जब शिमला में सर ये मीटिंग थी कंडा घाट में, आप गए होंगे,
जहाँ की काफ़ी कुछ वही से खेल हुआ। मैं शिमला में उतरा तो था कि कंडा घाट से वो सोलन जाने के लिए वो गाड़ी जो मिलेगी वो दैट विल टू बी पेड बाय दी ये सेंटर, नहीं नॉट बाय द सेंटर, बाय द पर्सन, वो बाद आप टीए देना जो करना। मैं गाड़ी से, चूँकि मेरा पैर दोबारा टूट गया था 87 के बाद, दोबारा टूट गया, इसमें प्लेट लग गया था, मैं चलने की स्थिति में आज तो थोड़ा चल भी ले रहा हूँ ना, पहले तो उस समय काफ़ी दिक्कत भी था। मुझे फ़ोन आया एक असिस्टेंट इंजीनियर का कि सर मैं PWD का असिस्टेंट इंजीनियर, आप गाड़ी से मत उतर। मैंने कहा क्यों भाई? तो नहीं सर मैं आ रहा हूँ। मुझे गाड़ी से एक आदमी आया, बैग लिया मेरा, मेरी मिसेज भी साथ में थी, आराम से ले गया। वहाँ बाकी लोग जो थे, मल्होत्रा साहब से मिले होंगे आज, वो CMD थे मेकन के, वो चूँकि मेरे साथ में वो भी थे, वो दिखाई दिए। गाड़ी पे बैठे तो इन्होंने पूछा कितना पैसा, तो उसने कहा नहीं पैसा आपको नहीं लगेगा। सर कहाँ से? वो मेरा कलीग वहाँ इंजीनियर इन चीफ था जो रांची में आकर पढ़ा था मेरे साथ, वो वहाँ था, उसको पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ, तो मुझे बिना पैसे की गाड़ी मिल गई। 1975 रुपये का जगह 5000 रुपये बच गए। जो मैंने 1975 लगाए थे उसके जगह 5000 रुपये मेरा वापस आ गया। तो सर भाईचारा आम करो, पैसा कोई मतलब नहीं रखता है। इसलिए बच्चों जो भी मेंबर बनोगे अपना अप्लाई करो, 20% मेरी तरफ से लो और अप्लाई करके मेरा नंबर ले लेना साहब लोग से, दुबे साहब से, मेहता साहब से, वो मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो, सर मैं आई हैव अप्लाइड, और तुम्हारा AMI सर्टिफिकेट जल्द से जल्द मैं भिजवा दूँगा। ठीक है, तो अब थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका बहुत समय ले लिया और मैं आप लोग का फिर धन्यवाद देता हूँ, और ख़ास करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टीचर्स को, प्रोफेसर्स को और यहाँ के मैनेजमेंट को कि आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स को इतना अच्छा माहौल दिया, इतने अच्छे बच्चों का पार्टिसिपेशन हुआ। इससे मुझे लगता है कि भविष्य उज्ज्वल है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का भी। धन्यवाद। थैंक यू सर। जबलपुर के प्रति आपकी पीड़ा और जबलपुर के प्रति आपका लगाव और स्टूडेंट्स के प्रति खास तौर से इट इज़ रियली अप्रिशिएबल। हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे यहाँ से अधिक मेंबर बन सकें, और मैं इस ओकेजन पर डॉक्टर इंजीनियर SK मेहता साहब को अनुरोध करूँगा कि वे आएँ और हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अंजलि, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय इंजीनियर शिवानंद जी राय जी को और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जबलपुर लोकल सेंटर के ऑनरी सेक्रेटरी मेहता जी अपने यहाँ का इस आज के अवसर का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। वहीं साथ ही मुख्य अतिथि के साथ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर धीरेन्द्र खरे साहब को भी आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। मेहता जी से अनुरोध है कि वे डॉक्टर अभिषेक शुक्ल जी, हमारे जो डायरेक्टर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको भी हमारा स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और साथ ही डीन फैकल्टी हॉर्टिकल्चर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करके और इसके सूक्ष्म से कार्यक्रम के पश्चात हम उस पायदान पर पहुंच गए हैं जहां हमें अपने अधिष्ठाता संकाय कृषि डॉक्टर धीरेन्द्र खरे जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं बड़े विनम्रता से और आपसे ये जानकारी देना चाहता हूं कि शिक्षकत्व जिनमें कूट कूट का भरा हुआ है और जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च शिक्षक के रूप में पुरस्कृत हो चुके हैं, उनकी अन्य बायोडाटा को न पढ़ते हुए मैं उस शिक्षकत्व को प्रणाम करता हुआ उन्हें सादर
विनम्रता से आवेदन कर रहा हूं डॉक्टर धीरेन्द्र खरे, डीन फैकल्टी एग्रीकल्चर। धन्यवाद नेमा साहब। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आपके 35वें नेशनल कन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एंड नेशनल सेमिनार ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर एडवांसेस इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में पधारे सभी वैज्ञानिकों, साथियों, विद्यार्थियों, अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को इस सेमिनार और अपने नेशनल कन्वेंशन के लिए सेलेक्ट किया। आपके इस कन्वेंशन के कारण हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पर उन्होंने अपने विषयों पर मंथन किया। लगभग 154 रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए गए या पोस्टर प्रेजेंटेशन और प्लेटफॉर्म प्रेजेंटेशन किया गया और 154 में आप लोगों ने कम से कम टोटल 38 रिकमेंडेशंस दी। ये 38 रिकमेंडेशंस उस तरह की नहीं है जिसको आप शासन को भेज सको या किसी को अडॉप्ट करने के लिए भेज दो या किसी को रिसर्च करने के लिए भेज दो। तो मैं ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनसे एक निवेदन करता हूं, आपका इस प्रोग्राम को आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। कल से मैं आज तक देख रहा हूं, कहीं किसी जगह पर कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको अच्छे से फिनिश करना भी बहुत आवश्यक है। उसको वैल्यूएबल तभी बना पाओगे आप जब इतने लोगों ने जो विचार व्यक्त किए उनको किसी एक जगह पर इस तरह से लाएं जिसको शासन शायद पॉलिसी इशू के तौर पर या रिसर्च वर्कर रिसर्च इशू के तौर पर या एक्सटेंशन वर्कर उसको किसान किस तरह से अडॉप्ट करे, कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो किसान तक पहुंचा सकते हैं, उस तरह की रिकमेंडेशंस आप उसको बनाएं। आप उसमें से ये चीज बताएं कि हमारे सिलेबस में इसमें से कौन सा पार्ट आना चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट क्या होगा, क्या रिसर्चेबल इश्यूज हैं, क्या पॉलिसी इश्यूज हैं, कौन सी ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बंद तो गई हैं लेकिन अभी हमको उसको फार्मर्स फ्रेंडली बनाना है, उसका एडॉप्शन आसान बनाना है। इन सारी चीज़ों के आधार पर आप रिकमेंडेशन दें और इस बात को ज़रूर रिकमेंड करें कि हमारे राज्य में इसमें से कौन कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, स्टेट में हमारे प्रदेश में कौन सी चीज़ें, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी चीज़ें, तब वो रिकमेंडेशंस होंगी और वो बहुत ज़्यादा होंगी तो 5 से 6 होंगी। 30-32 रिकमेंडेशन अगर आप 2 दिन के सेमिनार से निकाल देंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इस पर जरूर मंथन करें और उसको वैल्यूएबल बनाएं और वो चीज़ जब गवर्नमेंट के पास जाए तो उनकी पॉलिसी में आना चाहिए कि हाँ, इस वर्कशॉप, इस सेमिनार से ये बात आई थी और उसको हमने अडॉप्ट किया और ये अडॉप्शन के लायक एक रिकमेंडेशन है। इस बात का जरूर ध्यान करें। तो आप सबने 2 दिन इस विश्वविद्यालय को दिए, हमारे विद्यार्थियों के साथ चर्चा की, हमारे विद्यार्थियों ने आपके प्रेजेंटेशन को सुना, आपके पोस्टर्स को देखा और बहुत कुछ सीखा होगा, जाने या अनजाने में सीखा होगा, उनके भी प्रेजेंटेशन का लेवल बढ़ेगा। तो इस चीज़ के लिए भी हम आपके आभारी हैं कि आपने अपने अत्यंत व्यस्त समय से कुछ समय हम लोगों को दिया और जिस प्रकार के आपने लीड लेक्चर्स और कल जो मेहता साहब का लेक्चर, इस तरह के लेक्चर ऑर्गेनाइज किए, वो हम सबके लिए ज्ञानवर्धक था। और मैं आशा करता हूं कि यह महाविद्यालय भविष्य में भी इस तरह के इस तरह के प्रोग्राम्स आगे भी ऑर्गेनाइज करेगा और उसमें जिस तरह से आपको सहयोग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का मिला, आप और भी संस्थाओं को अपने साथ लाएं। और हमारे एक वाइस चांसलर कहते थे कि आप दोस्ती करें और वास्तव में दोस्ती करने में बहुत लाभ है। और जिस प्रकार से अभी हमारे इंजीनियर शिवानंद रॉय साहब भी बता रहे थे कि भाईचारे के लिए आप मेंबर बने, तो भाईचारे के लिए आप लोगों से साथ बनाएं और साथ में मिलकर हम लोग बहुत आगे तक का रास्ता तय कर सकते हैं। तो एक बार पुनः
मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप अपने अपने स्थानों से बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस यहाँ पर रुकने के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी हमारे साथी को अगर किसी तरह की कोई तकलीफ हुई है, उसके लिए मैं अपनी ओर से आपसे माफ़ी चाहता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में उस तरह की किसी भी तरह की परेशानियों को हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अधिष्ठाता संकाय कृषि संकाय। और आपने जो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं वो निश्चित रूप से हम लोग बैठ कर के इन रिकमेंडेशंस को उस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे जो लागू की जा सकें, चाहे वो राज्य स्तर पर हों या किसानों के स्तर पर हों या टीचिंग और एकेडमिक के स्तर पर हों। तो हम आपके मार्गदर्शन के पुनः आभारी हैं और प्रोटोकॉल के तहत आभार प्रदर्शन के लिए मैं पूरे संयोजन के सचिव आदरणीय जेपी पारस सर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के सदस्य, हमारे अपने ही विश्वविद्यालय के एलुमनाई, अरुणाचल प्रदेश में जिन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान करी और सेवानिवृत्त होकर के पुनः यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, आदरणीय पारस सर जी। धन्यवाद नमो सर जी। हमारे ऑनरेरी सेक्रेटरी संजय मेहता साहब 2 शब्द बोलना चाहते हैं, उसके बाद मैं आभार प्रदर्शन करूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने उन स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ। सर्वप्रथम यहाँ की स्टूडेंट का अभिनंदन। इस संस्था में मैंने पुरानी विधाएं जिंदा पाई। लगातार 3-4 महीने से मैं यहाँ आता रहा और जिस बहुत अपील जो किया मेरे को, मैं 11 तारीख की जब शाम को था तो हमारे स्टूडेंट्स, खास करके हमारी बेटियां जो रंगोली बना रही थी, उनके लिए सब तालियां। आपने पोस्टर तैयार कर रही थी। 12 तारीख की सुबह जब मैं आया तो मैंने यहाँ पर ऐसा माहौल पाया जैसे कोई त्योहार की सुबह हो और सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं कि हमारे यहाँ कुछ आयोजन होने जा रहा है। ऐसा अब शायद ही किसी शिक्षा संस्थान में मिलता हो। ये हमारे सीनियर प्रोफेसर्स की देन है कि यहाँ पर इतना अच्छा माहौल है और निश्चित रूप से हमारे पुण्यों का इस उम्र में उदय हुआ होगा कि मैं लगातार 4 महीने से आपके बीच आ रहा हूँ और इतना यहाँ आने के पहले भी मन बड़ा प्रफुल्लित रहता था और जाने के बाद भी एकदम ऐसा लगता था कि बहुत एनर्जी से भर के जा रहा हूँ यहाँ से। और फिर अपने काम मैं संचालित करता था, अपनी ड्यूटीज जो भी जहाँ जैसी थी वहाँ पर देता रहता था। तो निश्चित रूप से आदरणीय मंच का तो मैं आभारी हुई कि ये मुझे मौका मिला और ख़ास करके स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा जो सहयोग रहा उनका मैं पुनः अभिनंदन करना चाहता हूँ। माइक जेपी पाराशर साहब को सौंपता हूँ। आदरणीय प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया श्री शिवानंद राय साहब, मंच पर पदासीन सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित विभिन्न प्रदेशों संस्थान से आए हुए इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, वैज्ञानिक, रिसर्चर और विद्यार्थीगण, आज कृषि इंजीनियर्स का 35वां राष्ट्रीय सम्मेलन एवं 2 दिन का सेमिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह सभी आमंत्रित इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, प्रोफेसर्स जो विभिन्न प्रदेशों से आए, विभिन्न संस्थान से आए, बड़े अच्छे उन्होंने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए। यहाँ 4 टेक्निकल सेशन हुए, सभी बहुत अच्छी तरह से हुए। इन सब के लिए वो सब आपके लोगों के कारण ही हो पाया है, बहुत सफलतापूर्वक है। मैं तो चमत्कृत हूँ कहना चाहिए। बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने टेक्निकल सेशन किया है, उसके लिए मैं आप सबको इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जबलपुर की ओर से आप लोगों का तहे दिल हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ।
इसके बाद सर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स अपने कॉलेज के डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, इनके बारे में बताना चाहूँगा मैं, मुझे ज़्यादा मालूम जानकारी नहीं थी। ये फार्मेसी क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित इंजीनियर हैं और शिक्षाविद हैं। इन्होंने बहुत से लोगों को पीएचडी कराई है, मोर देन 100 इनके रिसर्च पेपर हैं। खेती के काम में आने वाली कई मशीनों को उन्होंने बनाया हुआ है और इनके जो स्टूडेंट्स हैं विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हें जो मशीनें बनाए इनके पेटेंट भी हो चुके हैं और बड़े विनम्र हैं। हम लोग जब भी इनके पास में आए हमें पूरा सहयोग मिला। फार्मेसी क्षेत्र के विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। इसके अलावा जो हैं डॉक्टर ICAR-NAHEP, उस सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन फील्ड के भी एक बड़े प्रतिष्ठित, कहना चाहिए, हमारे गौरव महसूस करता हूँ। मुझे बहुत चीज़ें उनके बारे में मालूम चली हुई हैं। उन्होंने ही बहुत से लोगों को पीएचडी कराई है, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर है, विजिटिंग प्रोफेसर्स है। और एक NAHEP का बड़ा ही प्रतिष्ठित कार्यक्रम है जिसकी सौभाग्यता रही सेमिनार में, वो उसको लीड कर रहे हैं। हमारे जो भी यहाँ प्रोफेसर्स हैं बड़ी तारीफ करते हैं इनकी, और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता है। इसके अलावा डॉक्टर अवस्थी, डॉक्टर अब्राल, डॉक्टर मोहन सिंह और सभी संकाय के जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, रिसर्चर हैं और स्टूडेंट्स के बारे में तो जितनी प्रशंसा हमारे मेहता साहब ने की है, उसी कारण ये हमारा कार्यक्रम सफल हो पाया। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता है और बिल्कुल एक करिश्मा किया है आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा सफलतापूर्वक हमारा हुआ है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स अपने मेंबर श्री सुरेंद्र सिंह पवार, जिनके बारे में बोला इतना ये जाता है, मैंने सुना है कि इनको कोई काम आप बोल दीजिए और समझ लीजिए 100% हो गया, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत मेहनत की है साहब उन लोगों ने, इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हमारे संजय मेहता साहब डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, बड़ा मैनेजिंग कैपेसिटी है। मैं तो उतना ज़्यादा जानता नहीं था, जब इसकी तैयारियां शुरू हुई तो मैंने देखा है उसको। बहुत दूर से ये इनकी नाइट ड्यूटी रहती थी, ड्यूटी करते थे, उसके बाद दिन में यहाँ कॉलेज में रेगुलर आए हैं यहाँ पर, काफ़ी दूर से इनको आना पड़ता था। और आज जो कार्यक्रम सा हो पाया, इतनी अच्छी तरह से हो पाया है, तो इनकी कहना है। मैं इन लोगों को आभार, मैं अभिनंदन करता हूँ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की ओर से। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के जो मेंबर हैं और चेयरमैन साहब के देखिए आप, एज होते ही एकदम यंग लगते थे, डेली यहाँ मतलब ऑलमोस्ट आते रहते थे और बहुत अच्छे से कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ है। अब चूंकि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैं अपने मन की बात जरूर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं मिला था सब्जेक्ट जहाँ मैं बात कर सकूँ। देखिए, ये इस तरह के सम्मेलन होते हैं, इनागुरेशन सेशन होता है, की नोट एड्रेस होता है, वहाँ बहुत बड़ी बातें होती हैं। उसके बाद टेक्निकल सेशन होता है, रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए जाते हैं विभिन्न विभागों की। मगर देखिए, यदि किसी प्रोफेशन को आपके आगे लेके जाना है, आपको उसको रोजगार से जोड़ना होगा। यदि आपका प्रोफेशन रोजगार उत्पन्न कर सकता है तो आपका प्रोफेशन बढ़ेगा। सिर्फ हमें संस्थान बनाने से और रिसर्च करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए टेक्निकल सेशन के साथ साथ भी एक सेशन ऐसा होना चाहिए जहां कृषि इंजीनियर्स के लिए रोजगार के अवसर, चुनौतियां, या हम जैसे फील्ड इंजीनियर्स अपनी बात रख सकें। तो आगे से कभी भी ऐसा हो, एक जनरल डिस्कशन के लिए एक अलग से एक सेशन जरूर होना चाहिए जहां हम अपनी बात कर सकें और आप उसको रिकमेंड कर सकें, जिससे शासन की नीति में वो आ सके। इसके अलावा मैं एक और बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फील्ड में रहा हूँ। होता क्या है कि मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 4 विधाएँ हैं, मेन सब्जेक्ट्स हैं। एक है फार्म मशीनरी, दूसरा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, तीसरा है पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी और चौथा है डेयरी इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग। जो फार्म मशीनरी सेक्टर है और जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इसमें ज़्यादातर स्कोप जो सरकारी विभागों में होते हैं। और जहाँ तक फार्म मशीनरी की बात है, उसमें डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है, तो उसमें कृषि इंजीनियर्स को प्रमुखता मिलती है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो सबसे बड़ा हमारा प्रमुख विषय है, जहाँ 5 साल उसको पढ़ते हैं, 2 साल हमारे बच्चे एमटेक करते हैं, पीएचडी करते हैं और सॉइल कंजर्वेशन के स्पेशलिस्ट बनते हैं।
मध्य प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में जो नोडल एजेंसी है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की, वो है कृषि विभाग। जब ये वैकेंसी निकालते हैं, आवेदन निकालते हैं, तो जो आवेदन में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखते हैं उसमें तो लिखते हैं डिग्री इन एग्रीकल्चर ऑब्लिक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जब वो इंट्रेंस टेस्ट होता है तो उसमें वो ट्रक्टफुली, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर वहाँ रहते हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को अलग कर देते हैं। तो भाई जब इंट्रेंस टेस्ट होता है और आपको सॉइल कंजर्वेशन के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियर की ज़रूरत है, तो उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिलेबस होना चाहिए। तो मैं जरूर चाहता हूँ आपकी जो 38 रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन ऐसी होनी चाहिए कि कृषि एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी निकलती है या कृषि विस्तार अधिकारी की निकलती है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स को तो लेना ही है, साथ में सिलेबस में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होना चाहिए ताकि वो अपने डिग्री के साथ न्याय कर सकें। होता क्या है मैं बता रहा हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश में रहा हूँ, तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन फील्ड में क्या है कि प्रोफेसर कोर्स करने के लिए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। एक देहरादून में है, एक हजारीबाग में है। तो खासकर मध्य प्रदेश की बात मैं बात करूंगा, अन्य प्रदेशों की बात बाद में करूंगा। यहाँ क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन काम के लिए एग्रीकल्चर साइंस को ग्रेजुएट को रिक्रूट करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियर से ज़्यादा काबिल है। फिर इनको ये जो अधिकारी होते हैं 6 महीने ट्रेनिंग कराने के लिए उनको देहरादून भेजते हैं, उसकी सैलरी देते हैं, TADA देते हैं। आप सोच सकते हैं जो कोर्स हम 5 साल पढ़ते हैं, 2 साल में PG पढ़ते हैं, क्या वो 6 महीने में एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकता है? इसलिए प्रदेश में जितना भी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का काम है बहुत अच्छे से नहीं होता है। तो मेरी अनुरोध है, रिकमेंडेशन जरूर होना चाहिए कि जो भूमि संरक्षण के कार्य में हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियर्स को प्रमुखता मिले। क्योंकि सिर्फ रिसर्च करने से नहीं, और एक हमें जरूर ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उनको हमारे बच्चों को जा मिले। और इसके साथ ही एक बार फिर मैं सभी जो लोगों का, खासकर उपस्थित डेलीगेट्स हैं, हमारे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के प्रोफेसर्स हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मेंबर को एक बार पुनः आभार प्रदर्शित करता हूँ। धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ ही कार्यक्रम का समापन यहाँ होता है। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूँ और आप सब बाहर चाय पर आमंत्रित हैं। प्लीज ज्वाइन विद अस, कप ऑफ टी।